Yeah, yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the da chamada, chamada na cena. Chamada, 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 chamada na cena. Matada, chamada, chamada na cena. Matada, chamada, chamada na cena. Chamada, chamada. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on, hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning. Star boy on the film named Marin. Feel like Brazil, how the man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. Listen to my when she see that motion. Yeah, yeah. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trailblazer. We can have a party in the Assassin's Creed Outlaws. Here we go, ladies and gents. da chamada, chamada na cena. Of course, around whether people are being unreasonable with certain expectations, what Rockstar's previous behavior has been, because often people think that the best indication of future behavior is past behavior. The best indication of what we can expect from X, Y, and Z is to look at the letters that came before, right? And in the case of GTA 6, there is one game that we can look at specifically, which is Red Dead 2. And there's 2 little things I just want to look at briefly to discuss this. Number one is comparing the trailers of previous Rockstar games to what we ended up getting, because there's a lot of claims that GTA 6 is going to, for example, massively downgrade visuals and stuff in the run-up to launch, which is a serious claim. And from certain studios, I think that is a fair concern to have, because they have a track record of doing that. But it raises the question, is Rockstar typically guilty of that? Do they tend to do this? Because obviously these trailers look really, really good. What are the odds it looks this good at launch? So what do? Well, we can look at Red Dead Redemption 2 trailers and compare what that looked like in the trailers versus the final version. See what they had to do there. Do they have a sort of company culture or history of over-promising and under-delivering? So we can look at the trailer comparisons and see that, because this looks obviously really good. Beyond that, we also can look at the leaks and the leaked information from Red Dead 2, and look at the leaks and information we have around GTA 6. Now, before we go through these, obvious thing probably doesn't need to be said, but I'll say it anyways. GTA 6 is kind of a special case because, for one, it is the biggest and highest budget entertainment thing ever made. 2, it has leaked more than anything Rockstar has ever done. Okay? If somehow you don't know, back in 21, 22, there were massive leaks where
like literally, I don't remember exactly how much it was, but it was like over 50 minutes of gameplay clips, in development footage of actual code and the engine being clipped and stuff, because basically people got into like Slack channels for employees at Rockstar and got access to all of the media. Like, you know how you go into like Discord and you can select media in a conversation of DMs and just see all of the video clips you sent? They were able to do that in Slack for the dev team and just download all of those clips. Woof. So it was like clips of, hey, I got this working. This tracker is now working in the quest with the car or whatever. It was like pretty seismic in terms of leaks. Okay, so that we know a lot more about GTA 6 than we did about Red Dead 2 at this stage in terms of leaked gameplay features, stuff like that. The difference is like Red Dead 2, obviously, we now can look back and see the trailers and check all of that out. But I just want to lay those things out flat first. Now, when we look back to start at Red Dead 2's trailer versus release, there's plenty of comparison videos that have been brought up and made. 3 years ago, brother Faller made this comparison video showcasing some of the trailer footage of Red Dead 2 with the final release. Interestingly enough, you'll notice they did some model swaps and model changes to Arthur Morgan close to launch. I don't know exactly what it is. I think they made his mouth a little smaller. I'm not exactly sure how to pinpoint it, but he looks weird in the trailer compared to his final version. I like his final version more, but I might just be biased. Okay. Like, to be fair, it might just be that I know the final version better than I know the trailer version. But like model changes doesn't honestly look that different in terms of fidelity. People thought they would cut the mud going on clothes back in 2018. The idea of being thrown onto a muddy piece of ground and then that mud transferring to your clothes, that was seen as like totally unrealistic. It's in the game. Even the base like PS4 version, it's in there. It ended up being real. No downgrades really to speak of. If anything, some of the rain effects actually look better in the final version, which is wild. Some of these comparisons, like you can see lighting, like some lighting bits have been changed. Some of the camera angles might have been tweaked a little bit. Texture work even seems improved in this shot versus the trailer. Like trailer actually looks like a lower quality texture on his skin than the launch version, which is fascinating. Like there's a lot of things that have been tweaked, but I actually think it looks improved. Which is insane to think that it actually looks better in many of the like gameplay snippets versus the trailers. Now this shot here, this is one where I don't think there actually is a moment where you can find this exact angle, but this is also kind of tricky to compare because at different times of day, different weather conditions, it'll look different. So if there's fog over the map at a certain point, you can get these types of God rays, but if it's a clear day, there's none. Like, so you're just kind of stuck trying to compare it. Like the weather has to match exactly, but that one maybe you could say has been tweaked or downgraded. But on the whole, like really, man, it looks really good. And I think in a lot of cases it may have even been improved in a lot of ways, which is pretty insane for a game that at the time looked graphically like beyond anybody's imagination, and to see that it was improved is wild. Now, as for GTA 6, I think the other kind of elephant in the room here is that I'm gonna say it. I think this is almost certainly a 30 FPS game. Okay, I think like almost certainly it's a 30 FPS game. So if they want to get it like running at 60 somehow, there's probably going to be graphical degradation in one way or another, as there usually are with performance modes, lower resolutions, stuff like that. But my understanding, having listened to talks on this from people way smarter than me, is that GTA 6 is most likely a CPU bound game. So like cranking the GPU power purely as you would see with like the PS5 Pro doesn't magically fix it. The CPU uplift on the PS5 Pro over the base is like 10%. Yeah. 10% CPU uplift does not equate to double the frame rate. What they probably are able to do Yeah. Pro Mic mode, check. which is what they've alluded to already, saying it plays best on PS5 Pro, right? But my guess up targeting 30, it seems. And that even some of the interviews that have been done by like Kiwi Talks with former engineers from Rockstar, those engineers have said like 60 is going to be tough. Like 60 is going to be tough. They might be able to unlock it and it sits around 40 most of the time.
if you got like a VRR display, that'll be better than 30, but like hitting 60 is going to be real tough. Now, as for the leaks comparison, there is a YouTuber, we've looked at some of his stuff before, and he does great work. I recommend you go subscribe to him. His name is Jetro. He is one of the good ones. Okay, there's a lot of channels that do GTA 6 and like Rockstar content. I'm just gonna be real, like a lot of them are kind of sloppish. Like a lot of them just are, you know, they just come out and they do really crappy stuff. Like I'm just gonna be real. A lot of them do. He's not one of them. Okay, he's not one of them. He does really good, like solid stuff, and sticks to the facts for as far as I've ever been seen or ever seen. So he does really good stuff. And in this video, he's gonna compare the videos and clips and stuff of Red Dead 2 leaks with the leaks of GTA 6 to see kind of where we are. Slop on YouTube, imagine that. Yeah, exactly. Imagine that. Oh yeah, it's and GTA specifically, it is really bad. It's really bad. There are so many channels that just will make stuff up and like have AI write their scripts for them. And they'll do the thing where it's like, you know, the classic staples of like AI scripts. Once you hear it, you can't unhear it. And you'll see a lot of YouTubers doing it where it's like, but YouTubers doing it where it's like, but YouTubers doing it where it's like, but Hello, hello, mic check, mic check, mic check. Hello, mic check. Michael check. Hello, hello, mic check, mic check, mic check. हेलो सही आ रही है आवाज तो माइक चेक माइकल चेक हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक हेलो सही आ रही है आवाज तो माइक चेक हाँ सही आ रही है माइकल चेक सही तो बोल रहा है तू हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक हेलो सही आ रही है आवाज तो माइक चेक हाँ सही आ रही है माइकल चेक सही तो बोल रहा है तू मैं तो हर टाइम सही बोलता हूँ भाई कभी गलत थोड़ी बोलता हूँ हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक हेलो सही आ रही है आवाज तो माइक चेक हाँ सही आ रही है माइकल चेक सही तो बोल रहा है तू मैं तो सब मैं तो हर टाइम सही बोलता हूँ भाई कभी गलत थोड़ी बोलता हूँ सही बात है अपने को एक्सपीरियंस है भाई हेलो सही आ रही है आवाज तो माइक चेक हाँ सही आ रही है माइकल सही तो बोल रहा है तू मैं तो सब मैं तो हर टाइम सही बोलता हूँ भाई कभी गलत थोड़ी बोलता हूँ सही बात है अपने को एक्सपीरियंस है भाई हाँ भाई एक्सपीरियंस तो एकदम कैड़ा है
सही तो बोल रहा है तू। मैं तो हर टाइम सही बोलता हूँ भाई, कभी गलत थोड़ी बोलता हूँ। सही बात है। अपने को एक्सपीरियंस है भाई। हाँ भाई, एक्सपीरियंस तो एकदम कैड़ा है। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। मैं तो हर टाइम सही बोलता हूँ भाई, कभी गलत थोड़ी बोलता हूँ। सही बात है। अपने को एक्सपीरियंस है भाई। हाँ भाई, एक्सपीरियंस तो एकदम कैड़ा है। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। वही ना भाई, मज़े देखो इतने ऐसे होने चाहिए। देखो कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। सही बात है। अपने को एक्सपीरियंस है भाई। हाँ भाई, एक्सपीरियंस तो एकदम कैड़ा है। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। वही ना भाई, मज़े देखो इतने ऐसे होने चाहिए। देखो कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। अरे मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, सेम सेम। क्रेजी। या सेम सेम बट डिफरेंट। भाई, एक्सपीरियंस तो एकदम कैड़ा है। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। वही ना भाई, मज़े देखो इतने ऐसे होने चाहिए। देखो कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। अरे मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, सेम सेम। अरे सब कॉफ़ी पी रहे क्या? चीयर्स भाई। या सेम सेम बट डिफरेंट। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। वही ना भाई, मज़े देखो इतने ऐसे होने चाहिए। देखो कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। अरे मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, सेम सेम। अरे सब कॉफ़ी पी रहे क्या? चीयर्स भाई। अरे चीयर्स भाई, चीयर्स चीयर्स। या सेम सेम बट डिफरेंट। आज तो माहौल बन गया भाई, इतने सारे लोग हैं। वही बात है भाई, अभी तो मज़े हैं अपने। वही ना भाई, मज़े देखो इतने ऐसे होने चाहिए। देखो कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। अरे मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, सेम सेम। अरे सब कॉफ़ी पी रहे क्या? चीयर्स भाई। अरे चीयर्स भाई, चीयर्स चीयर्स। या सेम सेम बट डिफरेंट। आज तो माहौल बन गया भाई, इतने सारे लोग हैं। हाँ भाई, इतने सारे लोग भाई, पहली बार भाई, लेट्स गो। कुछ देखते हैं अब। वही ना भाई, मज़े देखो। गेमটা খেলাই উচিত হয় নাই। अरे साल सा भाऊ क्या कर रहा हूँ भाई। एक सेकंड में आई। এটা কি সিঙ্গাপুর এখনো? না 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 মুম্বাই। रेस खेल रहे हैं, अरे भाई। जीएम भाई कर, जीएम भाई। এগুলা বুঝেই না। ওই দিন খেলতেছি, আমার রোমেন স্মোক না করে অফ করতেছে, আমার অফ নিছে। তারপর আমার রেনা ব্লাইন্ড কিনা একটা ব্লাইন্ড দেয় না, সাইডে ब्लाइंड ঢুকা যায় সবাই, সাথে সাথে মারা যায়। ম্যাচ থেকে বেড়ে গেছি পরে। वास्ते करा हूँ या। তারপর থেকে সিঙ্গাপুর খেলা শুরু করছি আবার। কম্পের জন্য সিঙ্গাপুরে বেস্ট, যদি সোলো কিউ করো অথবা ডুও করো। अरे चिया भाई कितने क्यूट देते हैं भाई। খেলি না কম্পিয়ার ভালো লাগে না তো, গেমটাই ভালো লাগতেছে না, কবে গেম কাইটা দিবি জানি না, কেন? ভালো লাগে না। জিটিএ স্ট্রিম করবা? ওইটাই তো सुमित खेल रहे हैं भाई। দেখতেছি, অন্যান্য ট্রাই अरे করবো, आज অন্যান্য क्लोव গেম ले रखे हैं भाई चिया भाई। क्रेजी ডাইং यार। লাইটটা খেলতেছিলাম। ডাইং লাইট আছে নাকি আপনার কাছে? জানি না, দেখতে হবে স্টিম লাইব্রেরি। এপিকে নিয়ে রাখেন নাই? ফ্রিতে দিছিল एपीके কবে? অনেক আগে দিছিল। मोबाइल है। আমার এপিক নতুন অ্যাকাউন্ট, আগেরটা নাই। তারপর আমার এই স্টিম অ্যাকাউন্ট, আগেরটা নাই। ফোরজা খেলো, বাট এটা স্ট্রিম করার মতো গেম আই ডোন্ট থিঙ্ক।
ले मेरा आ गया भाई ऋतिक सिंह जस्ट सब्सक्राइब। तो मेरी हेलो क्लास रित्वी, लग जाएगी भाई। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रो। ले उनको तो यार नाम पता ही नहीं भाई। बिल्ला से करो बस। हीलर तो नहीं, डोंट हैव हीलर। क्लोव तो हीलर ही होती है खुद के लिए। ए डैम भाई। साजन अरे ले बोलो ना, एक सेकंड। चैम भाई तो भाई 200 पिंग में भी खेल लेते हैं यार। क्रेजी है भाई। Spike planted. Watch your eyes. Wait, I'm not reading chats guys. Second. चैट्स नहीं रीड हेलो। करते। मैं स्ट्रीम रिएक्ट कर रहा। चैट्स क्यों नहीं रीड करते भाई? हेलो। आपका स्ट्रीम मेरा रिएक्ट कर स्क्रीन रहा। रीड कर रहे? अबे हाँ तो भाई स्ट्रीम मेरी तो stream? रिएक्ट। क्या बोल रहे हो कि मैं क्यों? मेरा चुगली हो रही है हाँ? My ult. ओए, सबका क्या? स्ट्रीम रिएक्ट होगा आज। मेरा परमिशन के बिना। अरे परमिशन नहीं मिलेगा। रीड से। अरे 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 ना ऐसा, अरे क्या भाई। माय सिस्टर। अबे 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 हेड आ गया भाई। मेरे स्ट्रीम कॉपीराइट दे दूंगी। मैं भी। अबे ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो गाइडलाइंस में है भाई। कॉपीराइट नहीं, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना। ये तो गाइडलाइंस में ही होगा। हाँ अगर मैं दोनों का स्ट्रीम ऑन करके वे देखता हूँ क्या स्ट्रीम कर रहा है। देखता हूँ क्या स्ट्रीम कर रहा है। अरे इनका चैट क्यों नहीं लोड आ रहा है? पहले सबका स्ट्रीम में जा रहा है वो। सिर्फ में जा रहा है वो। रेस के में बैठ, और अब आप ये तो दोनों का पीओवी मिल गया भाई। ये मत दिखाना 61 लो अल्लाह मर गई। यही दिखा दो भाई, एफ के दिखा दो। एफ के रहता है ये। घर पे बुला रहे थे, Down B. लास्ट मैच है मेरा, चैट क्यों नहीं लोड हो रहा? लास्ट मैच है मेरा। ऑल हो गई। लोग पी जाएगा। इन तो बड़े कैड़े हैं भाई जेएमआई के पास। उससे लगा भाई उससे। उससे लगा भाई उससे। प्लांटिंग बी। Spike planted. प्लांटिंग बी। लैब भी प्लांट हो गया। 2v3 चल रहा है। गाइस स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर कर दो, गाइस स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर कर दो। स्ट्रीम को लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी जल्दी बढ़ा। ओ लेट्स गो भाई। जल्दी जल्दी। डैम भाई Nice one. क्रेजी भाई, क्रेजी राउंड। दो साल सा क्या खेल रहे हो भाई तुम लोग? गर्दा बना दी भाई। अच्छी अच्छी बात है भाई, अच्छी अच्छी बात बोल रहे नाम हैं। नहीं लेके चेंज है। ओ चेंज है। ए, ओ ए, ये क्या तुमने? ओ भाई वो कॉबॉय वाली रोप निकाल दी भाई। हेलो तुम पूरा मेरे बस को चेंज कैसे? करो। हेलो ये थंबनेल ए भाई, 3 बार आवाज आ गई भाई। ठीक करो, ये क्या है? थंबनेल मैंने नहीं बनाया भाई, चैट जीपीटी में बनाया। क्या थंबनेल है? मेरा थंबनेल स्ट्रीम में ऐसे थंबनेल पे क्यों? ए क्या थंबनेल देखा दिया ये? हेलो क्या थंबनेल है? ये क्या थंबनेल है? अबे थंबनेल, थंबनेल में क्या दिक्कत है भाई? सही और भी रील्स था। मैं सोचा कोई और है कि क्या बोल रहा है ये रिएक्ट कर। हाँ? कोई और है कि क्या बोल रहा है। क्या है थंबनेल में भाई? प्रेम प्रे बोलते हैं। अरे क्या? हाँ? What? हाँ? अबे चीएम भाई अल्ट मार भाई। लेट्स गो। बच गया मैं, बच गया मैं, खुद को रिवाइव कर लिया भाई। सेल्फ रिवाइव। Player मर standing. गया, Last player standing. मर गया। কি বলা আর বয়স নাকি ছোট বাচ্চা থাকো তো ভাই। Last round in the half. বাচ্চা থাকো তো ভাই। আজ ডিপ ভয়েস বল না বলে, আজ ডিপ ভয়েস বল না। क्या? দুজন মানুষ এসে বলে क्या? ফার্স্টে চ্যাটে এসে বলে আমি 16 বছর নাকি। ফার্স্টে চ্যাটে এসে বলে আমি 16 বছর। बोलो yes yes. That's the compliment. That's the compliment. That's the আরেকজন আজকে ওই লাস্ট ম্যাচে বাংলাদেশে, লাস্ট ম্যাচে আরেকটা বাংলাদেশি আছে বুঝছেন ভাই। বাংলাদেশে লাস্ট ম্যাচে আরেকটা টিমে আসে নাই, টিমে আসে টিমে আসে নাই। বললাম না,
বললাম না সেই আমার স্ট্রিমার ছিল ওই বাংলাদেশি রিপোর্ট ছিল না, ওটা ছিল। ওই সব মানুষ তো সেম না। তানভীর আসছে। আমি কি বলছি? আমি একটু আগে তো বললাম। শুনছি তানভীর আসছে। শুনছি না ওইটাই তো না সবাই তো আসে না, সবাই। एक सेकंड आ गाइस বাট মোস্ট অফ देम আর লাইক আরে ফেড আমার না 0.001% 0.00120 আমি তো এটা দেখে বাবা আমার নাম মনে রেখে দিছে কেন? অবভিয়াসলি মনে রাখবে না। কেউ জন্য ট্রাই করছে না তো ওদের না 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 এবার জানো ট্রাই হ্যাঁ আসেই না আমার ফার্স্ট বার আসছে স্ট্রিমে। হ্যাঁ আসেই না আমার আরে ফার্স্ট বার আসছে স্ট্রিমে। আরে আমার ছিল ওর একটা নাম ছিল কি জানি একটা নাম ছিল ওয়াক্সি না ওয়াক্সিও তো সেম ভুলেই গেছো বুঝছি ভুলেই গেছো এই পিছে तो अभी नहीं हो जाते तुम आवाज नहीं आ रही Switching sides. आवाज नहीं आ रही Switching sides. हटो गाइस एस करनी है हटो गाइस अरे सब एस करने वाले हैं भाई लेट्स करो गो करो वाइस करो लेट्स गो एस देखेंगे एक किल में हूं मैं क्या लगता है एस होगा गाइस क्या लगता है भाई टेंस सिचुएशन है टेंस सारे हट जाओ दरवाजा बंद क्यों नहीं करते तुम लोग दरवाजा बंद क्यों नहीं क्या कहते हैं दरवाजा लगाने में इसको चाहिए बंदा दरवाजा लगाने में इसको चाहिए प्लांट ही नहीं कर रही No peeking. प्लांट ही नहीं कर रही जाओ I'm lagging कुछ नहीं दिख रहा अरे लैग हो रहा है टिटू लो है ये ये है चलेगा वो नहीं एस नहीं है टिटू लो है ये चलेगा One enemy remaining. 52 लो 52 लो Phoenix हिला नहीं है साउंड किधर से आ रहा था ऐसा तुम्हारे साउंड से सुनो साउंड इस सुमित वाला मैम बहुत क्यों नहीं साउंड बुलबुलैया टाइप का है भाई क्यों नहीं साउंड ও এই নাইফের সাউন্ড এরকম নাইফের সাউন্ড হয় হাই হাই আমি বলি কি সাউন্ড আছে ঢোলের সাউন্ড আসছে স্পেক্টর আছে স্পেক্টর Have a drop. Thank you. বলা সাউন্ড হয় বলা সাউন্ড এটা না Let's make some chaos. সাউন্ড আরে ঠিক আছে me কি বল লাগে I'm so tired Back in a flash. অ্যাড অফ হোয়াট Kill মাইক me ছিল মাইক अबे Phoenix तुम बस सवाल क्यों कर देते हो यार अरे फ्लैंक तो नहीं कर रहा हमारा होल्ड করে বলা फ्लैंक तो नहीं হয়েছে कर ঠিক জানো উফ মারো ওদিকে নেই সব সাইডে Last player হ্যাঁ standing. Ow 113 what the heck what the heck Ow ছিল আগে I'm nothing like the enemy clove. I wouldn't be caught dead in that ক্যান্সেল outfit. করে যাওয়া উচিত ছিল কখনই ল্যাগ হয়ে গেছে কি বলতাম খেলতে পারতে সেটাই বলো Reloading.
cry. Not to cry. ये कैसा स्प्रे है? Roll for initiative. Bomb buddy, spike drop. Back in a flash. हाँ क्यों नहीं? बैक साइड क्यों नहीं? Plant the spike. Plan? स्पाइक Bro, पीछे plan? में Bro, plan? पीछे में करना Drop in a smoke. Drop in a smoke. Planted. देखो मेरा सर दिखता है क्या? देखो मेरा सर दिखता है क्या? इधर देखो इधर देखो क्लच इधर। करो, क्लच करो। दोनों आ रहे दो तरफ। Player ऐसे standing. कैसे ऐसे कैसे दोनों आ ऐसे रहे दो तरफ। कैसे Phoenix Stars। ऐसे कहाँ पे कैसे तुम? कहे कहाँ पे हो तुम? हेलो बात है ये? हाँ? मॉली लेके क्या कर रहा था ये? मॉली लेके क्या कर रहा था Match ये? point. नहीं वो सोच रहे कि मॉली वेस्ट क्यों करते हैं सेव करते हैं वेस्ट क्यों करते हैं सेव करते हैं हाय हाय रिच को देखो, दोनों स्ट्रीम एक साथ ओपन करके बैठा है। अरे दोनों का पीओवी मिलेगा ना। वो चेक कर रहा है बीते कौन से चलो, में बीते कितना चलो। चेक कर रहा है बीते कौन स्पाइक से में में कितना डिले है अच्छा रिच, ये कौन सा वाला ज्यादा डिले है ये बताओ? ज्यादा डिले है ये बताओ। मुझे नहीं लगता वो साउंड सालसा का ज़्यादा डिले है। हमारा बात है तो साउंड करना बात साउंड बात करना। सुना रिप्लाई है नहीं ना? कर रहा सालसा का स्ट्रीम डिले लग रहा है नहीं कर रहा मैंने अच्छा। मैं कुछ बोला দেখো ওর কাছে নেপচুন আছে ফেক নেপচুন নেপচুন কি নেপচুন এটা? Doing a thing. ক্লাসিক। না 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 ফেক নেপচুন ফেক 120 अच्छा चैम्बर फेक नेपचुन। 120 चैम्बर अच्छा फेक यार तुमने मेरे को बेट क्यों किया इसको तुमने मेरे को बेट क्यों किया इसको गलत बात है भाई। आईसो को किडनैप करो जल्दी से। पेटर। मरने वाला हूँ मैं अभी, No peeking. मरने वाला हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं ही पली का पकड़ा हूँ, क्योंकि मैं ही पली का पकड़ा और यार शियाम का मटन बिरयानी बनाओ हूँ। भाई। My ultimate is वन टैप वन टैप खा जाओ अभी। One enemy remaining. लेट्स गो। 4 टैप मारा। 4 टैप मारा। मरने गए तुम उधर मरने गए तुम अरे फटने वाला है। ओ तेरे फट गया भाई बॉम्ब। बॉम्ब फट गया भाई। Sudden death. Yous don't get a reset button. So stay alive, please. क्या मस्त मस्त स्किन रखते हैं भाई चैम भाई। खुद लर्क करके चीप बोल रहे हैं मतलब खुद लर्क करके चीप बोल क्या ये क्या ये ক্রাউচ করছে জন্য इधर देखो कोई जा रहा है कौन जा रहा है? इधर देखो कोई जा रहा है कौन जा रहा है भाई उधर? कौन? अबे टेडी बियर रखा है भाई वहाँ तो। कोई 2% वोट ও এদিকে এদিকে कोई वो देखा रुके हुए हैं भाई, जा नहीं रहे। हैं? এদিকে আসো এই যে এদিকে এদিকে দাঁড়াও देखो अच्छा किधर जा रहे थे? ওয়াও Spike down जी A. चीज गाइस, Last player standing. यार किसी और को मार रहा था मैं मर गया। ड्रॉप देखे ड्रॉप इससे तो नहीं होने वाला इससे तो नहीं होने वाला ये तो गया। जी गाइस Defenders win. चलो मैं जाती हूँ जा रहे हैं? बाय टेक केयर सी या बाय अब मैं किसकी स्ट्रीम देखूंगा? पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा हर्षबा देरी हो गए मने আসতে हर्षबन हर्षबन আছে हर्षबन না বললাম हर्षबन আছে মানে পাশে বললাম মানে না বললাম আমার বাসায় যাবা হ্যাঁ না বললাম আমার বাসায় যাবা রেডি হ্যাঁ বললা না থাকবা আচ্ছা বললা না থাকবা আমি থাকবো আচ্ছা গেলাম লাক্স গেলাম লাক্স
Take care. See ya. well. अबे ये तो उल्टा हो रहा है भाई। Match found. ले এক সেকেন্ড ধরে আসতেছি, ফোনটা চার্জ নেই। क्या लगता है GM भाई क्या चूज करेंगे? मिक्स लेट्स गो भाई। मिक्स के पास क्या एबिलिटी है? फैंटा और माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू से हेल्थ बढ़ती है, फैंटा से स्लो हो जाती है स्पीड। बैक वेलकम बैक। আমার কি 200 হয়েছে এখনো? কত বাকি আর? 4 ড্যাম হয়ে যাবে একটু পরেই। ইনশাআল্লাহ। Dada, we've got the MVP crew today. Yeah, you can tell the others. I देखिए आज said की that. 200 ले ऑफ करो। नहीं হ্যাঁ 200 Can someone get this? Need a drop. দাদা আমি পাইছি আমাকে দাও। भाई सेज की छड़ी कितनी मस्त है भाई। আমি পাই দেই নাই তো। কে ভাই দিছে? এলবি ম্যাক্স ভাই দিছে। হ্যাঁ দিয়ে দিছে তাই তো বলি আমার কাছে 7 টাকা কেন? रुको यार सबटाइटल ऑन करने दो। ले सबटाइटल ही नहीं है इस स्ट्रीम पे। ये चलेगा? ले छड़ी बोलते इसको। कोई जाने वाला है? ओ भाई साहब फंस गया। अरे ओ नहीं भाई ये कैसा ऑफ फायर? 1 week 1 गेम क्या भाई? 1 week 1 गेम চিট করতেছে ये चीट करते तो भाई সবাই আটকে দিয়েছে ডেডলক। Not just for us. আর আমি স্মোকের ভিতরে ছিলাম আমাকে হেডশট মারছে। কে ক্লোজ ক্লোভ হ্যাঁ আমার से দুইটা হেডশট। হেডশট দিছে না? দুইটাই চিট করতেছে ভাই। रिपोर्ट रिपोर्ट कर दो भाई। रिपोर्ट क्लोव बस सीसीटी बिल्ली आई हुई। क्लोव चीटिंग देखो हेडशॉट मारो। There they are. सारे इधर है। Shot done. ওটা কেমনে জান আমরা দেখে सस रोटेट करो। Pipe down. और हिल दे। ভুলে গেছে তো আমি সে আচ্ছা ও জানে কিভাবে গায়ল? আমরা এদিক দিয়ে তো জানে কিভাবে ভাই? হেড লাগছে। Spike down mid. हेड ना हेड मारा ना भाई। Smokes up. जय भाई तो बिना देखे हेड मार देते हैं भाई। One enemy remaining. Have the spike. मैं डर कैसे? ভুলে গেছে। Get here. लेट्स বান্ডাল নিচে বান্ডাল
Dance. The right rhythm changes everything. Baik juga kan. Prime. তোমার কি চ্যাম্পিয়ন এক্স আছে আমার জিএক্সটা কিন্তু ভালো আছে Eyes on target. প্লেন কিন্তু ভালো আছে ফিচার্স আছে অনেক Revealing area. ইন্সপেক্টর वगैरह GALAX देखते हैं भाई। আমি জানতাম না मीम मंदिर You know you love me. I know you अल्लाह भाई कॉपीराइट लग जाएगा क्या इस वाले से? चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती वाले अल्लाह भाई अरे बाप रे घोस्ट ऑफ सुशीमा का ग्राफिक्स इतना हाई है भाई कैरेक्टर गाड़ी को चलते हैं ना मैं पता नहीं लग पा रहा कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है सामने आ जाते तो विजन स्प्लिट फिक्शन ऊपर 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 नीचे 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 गॉड ऑफ वॉर भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई वॉर ऑफ गॉड लग रहे हैं भाई अरे इनके में क्या चल रहा है भाई भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सेम यही चीज मैंने बोली भाई अपने व्यूज कितने मिलते जुलते वॉर ऑफ गॉड लग रहे हैं भाई अरे इनके में क्या चल रहा है भाई भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सेम यही चीज मैंने बोली भाई यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार व्यूज कितने मिलते जुलते वॉर ऑफ गॉड लग रहे हैं भाई अरे इनके में क्या चल रहा है भाई भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सेम यही चीज मैंने बोली भाई यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार व्यूज कितने तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या अरे इनके में क्या चल रहा है भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सेम यही चीज मैंने बोली भाई यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार व्यूज कितने तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या तो वही रहा है इनके में क्या चल रहा है अबे मैं भी वही पी रहा हूँ कॉफी भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सेम यही चीज मैंने बोली भाई यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार व्यूज कितने तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या तो वही रहा है इनके में क्या चल रहा है अबे मैं भी वही पी रहा हूँ कॉफी भाई तो खुद ही गॉड ऑफ वॉर लग रहे हैं भाई अबे सब वही पी रहे हैं क्या चीयर्स मैंने बोली भाई यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार क्रेजी भाई यही तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या हाँ तो वही रहा है इनके में क्या चल रहा है अबे मैं भी वही पी रहा हूँ कॉफी भाई तो खुद ही उस स्ट्रीम में भी सब सब वही पी रहे हैं क्या चीयर्स चीयर्स यही तो मैं भी देख रहा हूँ यार क्रेजी भाई यही तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या हाँ वही बोला मैं भाई सब एक स्ट्रीम में अबे मैं भी वही पी रहा हूँ कॉफी हाँ मैं पी रहा हूँ मेरी ऑलमोस्ट होने वाली है चीयर्स 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 भाई चीयर्स तो मैं भी देख रहा हूँ यार क्रेजी भाई ये तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या हाँ एक ही वही बोला मैं भाई सब एक स्ट्रीम में अबे मैं भी वही पी रहा हूँ कॉफी हाँ मैं पी रहा हूँ अबे हाँ पी रहा हूँ चीयर्स 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 भाई चीयर्स भाई इतने बार करेगा चीयर्स बोल रहा हूँ मैं भी तो यही देख रहा भाई भगवान क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे क्या हाँ एक ही वही बोला मैं भाई अबे एक ही देख रहे हैं भाई स्ट्रीम तब से
पी रहा हूँ अबे हाँ पी रहा वाली हूँ है गजब है यार। चीयर्स ले भाई चीयर्स भाई अरे ले भाई बात चीयर्स करेगा चीयर्स। अरे वही बात भगवान। क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे हैं क्या हाँ हाँ एक हाँ ही वही है। बोला मैं भाई अबे एक ही देख रहे हैं भाई स्ट्रीम तब से। मैं पी रहा हूँ अबे हाँ पी रहा वाली हूँ है गजब है यार। चीयर्स ले भाई चीयर्स भाई अरे अरे ले भाई भाई, चीयर्स cheers वेयर छोड़ अब अरे वही बात खत्म होने वाला है मेरा भगवान। क्रेजी भाई सब एक ही स्ट्रीम देख रहे हैं क्या हाँ हाँ एक हाँ ही वही है। बोला मैं भाई अबे खाली एक ही गिलास देख चिकर रहे हैं भाई करूंगा क्या stream तब से। मैं पी रहा हूँ अबे हाँ पी रहा वाली हूँ है गजब है यार। अरे पी ली ले भाई चीयर्स भाई अरे ले भाई चीयर्स वेयर छोड़ अब अरे वही बात खत्म होने वाला है मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको चीयर्स की पड़ी है हाँ एक ही है। ऐसा अबे ही है एक खाली ही गिलास देख चिकर रहे हैं भाई करूंगा क्या stream तब से। भर के ले आ फिर अबे हाँ पी रहा हूँ गजब है यार। भर ला ले भाई चीयर्स भाई अरे ले भाई चीयर्स वेयर छोड़ अब अरे वही बात खत्म होने वाला है मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। सब नकलची है भाई एक से बढ़कर एक क्या तब से। भर के ले आ फिर अबे हाँ पी रहा मैं हूँ क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो गया आज का कोटा भाई, कॉफी इतना ही पीऊंगा मैं अरे ले भाई चीयर्स वेयर छोड़ अब अरे वही बात खत्म होने वाला है मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही सबका सब खत्म नकलची है भाई भाई एक से बढ़कर एक क्या तब से। भर के ले आ फिर अबे हाँ पी रहा मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो गया आज का कोटा कॉफी भाई जबरदस्ती थोड़ी ना एक कप कॉफी काफी है अभी दिन खत्म स्टार्ट होने करने वाला वाला है है मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही सबका सब खत्म नकलची है भाई भाई एक से बढ़कर एक क्या तब से। नहीं तो भर के ले आ फिर हाँ पी रहा मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो गया आज का कोटा कॉफी भाई इतना ही जबरदस्ती पीऊंगा। थोड़ी कौन बोल रहा है ये बार बार भरने को भाई कॉफी दिन स्टार्ट स्टार्ट करने वाला है मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही सबका सब खत्म नकलची है भाई भाई एक से बढ़कर एक क्या तब से। नहीं तो भर के ले आ फिर हाँ पी रहा मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो अपने गया से ही आज का बातें कर कोटा। रहे हैं भाई ये लोग भाई जबरदस्ती स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ी है है क्या? बोल रहा है ये बार बार कप भरने को कॉफी भाई काफी है कॉफी अभी दिन खत्म स्टार्ट होने करने वाला है के लिए। मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। अब वही मैं सबका कॉफी खत्म खत्म ही कर भाई। देता हूँ। एक एक से बढ़कर एक तब से। नहीं तो भर के ले आ फिर हाँ पी रहा मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो अपने गया से ही आज का बातें कर कोटा। रहे हैं भाई खत्म ये लोग भाई जबरदस्ती थोड़ी स्किज़ोफ्रेनिया है है क्या? बोल रहा है पोलियो ये बार दोबारा बार भरने भरने या भाई पीने के कॉफी लिए दिन स्टार्ट खत्म होने करने वाला के है लिए। मेरी हो गई खत्म मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही मैं सबका कॉफी खत्म खत्म ही कर भाई। देता हूँ। होने तो दो भाई खत्म हो गया बस नहीं तो भर के ले आ फिर अब मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो अपने गया से ही आज का बातें कर कोटा। रहे हैं भाई भाई ये खत्म लोग भाई जबरदस्ती स्किज़ोफ्रेनिया थोड़ी है है। क्या? वही मैं भी दोबारा कहा भरने या स्किज़ोफ्रेनिया हो पीने रखा के है लिए दिन स्टार्ट करने के लिए। मेरी हो गई खत्म मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही मैं सबका कॉफी खत्म खत्म ही कर भाई। देता हूँ। होने तो दो भाई खत्म हो गया बस नहीं तो भर के ले आ फिर अब मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो अपने गया से ही आज बातें का कर सबने रहे हैं खत्म भाई कर लिया ये लोग स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? वही मैं भी कहा दोबारा भरने या स्किज़ोफ्रेनिया हो पीने रखा के है लिए दिन स्टार्ट करने के लिए। मेरी हो गई खत्म मेरा भी खत्म होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की पड़ी होगा। है। वही मैं तुम कॉफी तुम खत्म ही कर शांत हो देता जाओ हूँ। अब होने तो दो भाई खत्म हो गया बस अब थोड़ा चिल मारो अब मैं क्यों भर के लाऊं भाई मेरा हो अपने गया से ही आज बातें का कर सबने रहे हैं खत्म भाई कर लिया स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? वही मैं भी कहा दोबारा भरने या स्किज़ोफ्रेनिया हो पीने रखा के है लिए दिन स्टार्ट करने के लिए। मेरी हो गई खत्म सब यार होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की होगा। पड़ी है। तुम शांत हो जाओ अब होने तो दो भाई खत्म हो गया बस अब थोड़ा भाई चिल मैं भी मारो बोला शांत हो। अब मैं क्यों भर के लाऊं भाई चुप मेरा एकदम हो से ही गया बातें आज कर का रहे हैं सबने भाई खत्म कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ वही मैं भी कहा स्किज़ोफ्रेनिया हो रखा है दिन स्टार्ट करने के लिए। मेरी हो गई खत्म सब यार होने वाला है भाई इनको अब सबका cheers खत्म की होगा। पड़ी है। तुम शांत हो जाओ अब होने तो दो भाई अरे यार मेडिटेशन थोड़ा करने chill दो मारो, भाई मैं क्यों भर के मत बोलो चुप शांत एकदम से ही बातें कर सबने रहे हैं खत्म भाई कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ वही मैं भी कहा स्किज़ोफ्रेनिया हो रखा ये है नहीं चुप होने वाले भाई मेरी हो गई खत्म सब यार होने वाला है भाई इनको अब सबका खत्म होगा। तुम शांत हो जाओ अब होने तो दो भाई अरे यार मेडिटेशन थोड़ा करने chill दो मारो, भाई मत ऐसे बोलो तो नहीं शांत हो पाएगा भाई मेडिटेशन कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ वही मैं भी कहा स्किज़ोफ्रेनिया हो ये नहीं चुप होने वाले भाई मेरी हो गई खत्म सब यार होने वाला है भाई इनको अब सबका खत्म होगा। तुम शांत हो जाओ अब होने तो दो भाई अरे यार मेडिटेशन थोड़ा करने chill दो मारो, मेरे को गुस्सा आ जाएगा शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए शांत। हो पाएगा भाई मेडिटेशन कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा हूँ भाई 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ मेरे को मेडिटेशन करने दो भाई तुम चुप बस तुम शांत हो जाओ अबे फिर होने तो बोल दो अरे यार मेडिटेशन मेरे को गुस्सा आ जाएगा शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए हो शांत। पाएगा भाई मेडिटेशन कर लिया थोड़ा सा मेडिटेशन कर बोल लो बोल भाई, लो 2 बोल लो मिनट के लिए शांत हो जाओ मेरे को मेरे को 2 meditation मिनट की करने दो छूट भाई। बोल लो भाई पहले बोलना खत्म कर लो बस तुम शांत हो जाओ अबे होने फिर तो बोल दो अरे यार मेडिटेशन मेरे को गुस्सा आ जाएगा शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए हो शांत। पाएगा भाई मेडिटेशन कर लिया थोड़ा सा अरे रिएक्ट बोल लो, बोल लो, करने बोल लो। भाई रिएक्ट शांत करने हो गया जाओ, अभी मेरे को थोड़ा 2 देर मिनट में की बोला छूट बोल कि लो भाई। शांत हो जाओ अब पहले बोलने तो दो भाई बस चैट चैट तो बोलने दो मेरे को
अरे यार मेडिटेशन मेरे को गुस्सा आ जाएगा। वही मैं बोल रहा भाई कि अपना खुद का आएगा स्ट्रीम भाई। रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये बोलने नहीं दे रहे। अरे रिएक्ट बोल तो लो, बोल लो, भाई बोल लो, करने, बोल लो। भाई रिएक्ट करने गया अभी थोड़ी देर कर, मैंने कर, बोला कर, कि कर, शांत कर, हो जाओ। मैं तो भाई अबे मेडिटेशन बोलने तो दो भाई। अरे चैट तो बोलने दो मेरे को। अरे यार बोल ले भाई। मेरे को गुस्सा आ जाएगा। वही मैं बोल रहा भाई कि गुस्सा अपना कर खुद तू, का स्ट्रीम रिएक्ट कर गुस्सा रहा है, करके लेकिन ये दिखा। बोलने नहीं दे रहे। अरे रिएक्ट बोल तो लो, बोल लो, भाई बोल लो, करने, भाई रिएक्ट करने गया अभी थोड़ी देर कर, मैंने कर, बोला कर, कि कर, शांत हो जाओ। मैं तो भाई अबे मेडिटेशन भगवान। तो भाई। अरे चैट तो बोलने लड़ दो लो, मेरे को। आज ही लड़ बोल लो ले भाई। भाई। मेरे को गुस्सा आ जाएगा। वही मैं बोल रहा भाई कि गुस्सा अपना कर खुद तू, का स्ट्रीम रिएक्ट कर गुस्सा रहा है, करके लेकिन ये दिखा। बोलने नहीं दे रहे। अरे रिएक्ट बोल तो लो, बोल लो, कैसे कैसे करने, करोगे भाई। रिएक्ट करने गया अभी थोड़ी देर कर, मैंने कर, बोला कर, कि कर, शांत हो जाओ। मैं तो भाई अबे मेडिटेशन भगवान। तो भाई। चैट तो बोलने लड़ दो लो, मेरे को। आज ही लड़ बोल लो ले भाई। भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। वही मैं बोल रहा भाई यहाँ कि शांति का माहौल गुस्सा बना करके के दिखा। रखे हैं भाई कि मैं बोला मेडिटेशन करते हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। भाई रिएक्ट करने गया अभी थोड़ी देर कर, मैंने कर, बोला कर, कि कर, शांत कर, हो जाओ। मैं तो भाई अबे मेडिटेशन भगवान। तो भाई। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। वही मैं बोल रहा खाली भाई बोलते रहो, लड़ो मत। माहौल करके बना के दिखा। रखे हैं भाई कि मैं बोला मेडिटेशन करते हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। भाई रिएक्ट करने गया अभी थोड़ी देर कर, मैंने कर, बोला कर, कि कर, शांत हो जाओ। भगवान। मैं तो भाई अबे मेडिटेशन भगवान। तो भाई। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं खाली शांत। बोलते रहो, लड़ो मत। अब मैं शांत हूँ। अब अगर कोई बोला ना, मैं एकदम शांत बैठ रहा हूँ अब। रिएक्ट करने गया एकदम चुप। थोड़ी देर मैंने बोला कि अरे भगवान, बोलो भगवान। भाई। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज ही लड़ लो भाई। मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ गया। अब मैं जा रहा भाई। अब अगर कोई बोला ना, को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा। मैं जा रहा एकदम चुप। अरे भगवान, बोलो भगवान। अरे भाई रहने दो यार। लड़ लो, आज
आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई, मैं कह रहा लड़ लो भाई। मैं कुछ मैं जा रहा, मैं ये कमरा ही छोड़ के लड़ो मत। अब मैं जा रहा भाई, अब अगर कोई मेरे को स्ट्रीम ही नहीं करना, मैं जा रहा, मैं जा रहा एकदम चुप। हे भगवान बोलो भगवान भाई, अरे भाई रहने दो यार, लड़ लो आज ही लड़ लो भाई। सब शांत हो गए? चलो ये अच्छी बात है। और आराम से मेडिटेशन करूँगा। सब शांत हो गए? हाँ भाई, इतना चलो वो भाई, हल्ला करने लग गए थे, दिमाग अच्छी खराब हो गया बात है। था। वही, और आराम से मेडिटेशन करूँगा। हाँ भाई, मेडिटेशन करते आ जाओ। चलो भाई, सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब। इतना चलो वो भाई, हल्ला करने लग गए थे, दिमाग वही खराब हो गया भाई, था। वही, फालतू का 2 मिनट आराम की से शांति मांगी थी खाली। मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन हाँ भाई, मेडिटेशन मेडिटेशन करते आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब। इतना चलो वो भाई, हल्ला हाँ करने लग गए थे, दिमाग वही खराब हो भाई, गया था। हल्ला हो गया था। वही, फालतू का 2 मिनट आराम की से शांति मांगी थी हाँ खाली। मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन हाँ भाई, मेडिटेशन मेडिटेशन करते आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। मेडिटेशन यस लेट्स गो। चलो भाई, ओम सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब। इतना चलो वो भाई, हल्ला हाँ करने लग गए थे, अरे दिमाग वही खराब हो भाई, गया था। हल्ला हो गया। आ जाओ जो सब आ फालतू जाओ, का सब 2 साथ में मिनट बैठ की जाओ, एक शांति बार फिर मांगी थी। हाँ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन हाँ भाई, मेडिटेशन मेडिटेशन करते आ मेडिटेशन जाओ। यस आ जाओ आ जाओ। मेडिटेशन यस लेट्स गो। चलो भाई, ओम सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब। इतना चलो वो भाई, हल्ला हाँ करने लग गए थे, अरे दिमाग वही खराब हो गया भाई, था। हे भगवान, आ जाओ जो सब आ फालतू जाओ, सब का साथ 2 में मिनट बैठ की जाओ, एक शांति बार फिर मांगी थी। हाँ मेडिटेशन करते हैं। करूँगा। मेडिटेशन हाँ भाई, मेडिटेशन एक बार करते सब आ जब बैठ जाओ ना, तब जाओ। बता देना मेरे को। मेडिटेशन यस लेट्स गो। चलो भाई, ओम
सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, भाई, शांत हो गए सब, इतना शांत हो गए, ठीक है चलो। हल्ला करने लग गए थे अरे तो भाई, वही भाई, हे भगवान, आ जाओ, सब आ जाओ, सब साथ में बैठ जाओ। अरे एक बार यार। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन हाँ भाई, मेडिटेशन। meditation एक बार सब yes। जब बैठ जाओ ना तब बता देना मेरे को। मेडिटेशन, यस, लेट्स गो। चलो भाई, ओम सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब, बस शांत शांत हो अब। गए, ठीक है चलो। हल्ला करने लग गए थे अरे तो वही भाई, हे भगवान, आ जाओ, सब आ जाओ, सब साथ में बैठ जाओ। अरे यार, अबे क्या हुआ? मेडिटेशन, हाँ भाई, meditation एक बार सब yes। जब बैठ जाओ ना तब बता देना मेरे को। चिल्ला क्यों रहा है भाई? यस, लेट्स गो। चलो भाई, ओम सब शांत हो गए? हाँ हाँ भाई, शांत हो गए सब, बस शांत शांत हो अब। गए, ठीक है चलो। हल्ला करने लग गए थे ठीक है तो चलो। वही भाई, हे भगवान, आ जाओ, सब आ जाओ, सब साथ में बैठ जाओ। अरे एक बार यार, meditation करते अबे हैं। क्या हुआ? क्या हो गया अब? एक बार सब जब बैठ जाओ ना तब बता देना मेरे को। चिल्ला क्यों रहा है भाई? यस, वो चिल्ला रहा है भाई, ओम उसको शांत करा। हाँ भाई, शांत हो गए सब, बस शांत हो शांत गए, अब। ठीक है चलो। हल्ला करने लग गए ठीक थे है तो चलो। वही भाई, हे भगवान, आ जाओ, सब आ जाओ, सब साथ में बैठ जाओ। अरे एक बार यार, meditation करते अबे हैं। क्या हुआ? क्या हे हो गया अब? भगवान, एक बार सब जब बैठ जाओ ना तब बता देना मेरे को। चिल्ला क्यों रहा है भाई? यस, वो चिल्ला रहा है भाई, अब मेरा दिमाग मत उसको खराब शांत करो, करा। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। बस शांत शांत हो अब। गए, ठीक है चलो। हल्ला करने लग गए थे ठीक है तो चलो। वही भाई, हे भगवान, आ जाओ, सब आ जाओ, सब साथ में बैठ जाओ। अरे एक बार यार, meditation करते अबे हैं। क्या हुआ? क्या हे हो गया अब? भगवान, एक बार भाई सब ये जब लोग नहीं बैठ करने जाओ ना तब देंगे। बता देना मेरे को। चिल्ला क्यों रहा है भाई? वो चिल्ला रहा है भाई, पीछे वाले सारे निकल मेरा जाओ भाई, दिमाग एक मत काम खराब करो, करो। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। बस शांत अब। ठीक है चलो। ठीक है चलो, नहीं तो सब साथ में बैठ जाओ। अरे यार, अबे क्या हुआ? क्या हे हो गया अब? भगवान, भाई ये लोग नहीं करने देंगे। कौन है ये? चिल्ला क्यों रहा है कौन भाई? चिल्ला रहा है भाई? वो चिल्ला रहा है भाई, पीछे वाले सारे निकल मेरा जाओ भाई, दिमाग एक मत काम खराब करो, करो। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। तू निकलना। ठीक है चलो। ठीक है चलो। चिल्ला तो तू रहा है। सब साथ में बैठ जाओ। अरे यार, अबे क्या हुआ? देख यही क्या चिल्लाया हो अभी। गया? भाई ये लोग नहीं करने देंगे। कौन है ये? हाँ मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा है भाई। वो चिल्ला रहा है भाई, पीछे वाले सारे निकल मेरा जाओ भाई, दिमाग एक मत काम खराब करो, करो। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। तू निकलना। तो तू निकल। चिल्ला तो तू रहा है। अरे यार, अबे क्या हुआ? देख यही चिल्लाया अभी। भाई ये लोग नहीं तू करने चिल्लाया देंगे। भाई। कौन है ये? हाँ मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा है भाई। वो चिल्ला रहा है भाई, पीछे वाले सारे निकल मेरा जाओ भाई, दिमाग एक मत काम खराब करो, करो। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। तू निकलना। हाँ तो तू निकल। चिल्ला तो तू रहा है। अरे यार, अबे क्या हुआ? देख यही चिल्लाया अभी। भाई ये लोग तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चिल्ला छोड़ रहा दो, मेरे को अकेले करने दो भाई, ये मेडिटेशन ग्रुप नहीं काम करने वाला भाई। मेरा दिमाग खराब करो। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। तू निकलना। मैं तो तू निकल। हाँ तो मैं चला जा रहा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, अबे क्या हुआ? देख यही चिल्लाया अभी। भाई ये लोग तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चिल्ला छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक है, ये तू चले जा, meditation तू ग्रुप चले नहीं जा, काम तू करने जा। वाला भाई। तुम फिर चिल्लाने लग गए हो। तू निकलना। चले जा भाई, शांति हो जाएगी। हाँ, तो तू निकल। हाँ तो मैं चला जा रहा भाई, तो जा, कोई दिक्कत नहीं है, जा फिर जा। यार, अबे क्या हुआ? देख यही चिल्लाया अभी। भाई ये लोग तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चिल्ला छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक ये है, तू meditation चले जा जा, ना तू भाई, जा। जा, इतना रो मत जा। तू चले जा जा भाई, भाई, जा। शांति हो जाएगी। हाँ, तो तू निकल। हाँ तो मैं चला जा रहा भाई, तो जा, कोई दिक्कत नहीं है, जा फिर जा। यार, अबे क्या हुआ? देख यही चिल्लाया अभी। भाई ये लोग तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक है, तू meditation चले जा जा भाई, जा। जा, इतना रो मत चले जा। तू चले जा भाई, शांति हो जाएगी। हाँ, तो तू अबे निकल। तू हाँ, जा तो मैं ना, चला जा रहा भाई। खुद ही तो बोल रहा तो जा, जाने के कोई लिए। दिक्कत नहीं है। जा फिर जा। यार, अबे क्या हुआ? अजीब है भाई। तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक है, तू meditation चले जा जा भाई, जा। जा, इतना रो मत चले जा। तू चले जा भाई, शांति हो जाएगी। हाँ, तो तू अबे निकल। तू अबे जा ना, तू जा खुद ही भाई। तो बोल रहा तो जा, जाने के कोई लिए। दिक्कत हाँ नहीं है। उसको जा फिर जा। भाई, दूसरों को बोल रहा। अजीब है भाई। तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक है, तू meditation चले जा जा। भाई। अब इसके बाद बोला ना अकेले, तू चले जा भाई, जा। सही में अकेले तो भेज देंगे तेरे को। तू जा अबे ना। तू जा खुद भाई, ही तो बोल रहा तो जाने के लिए। हाँ उसको जा फिर जा। भाई, दूसरों को बोल रहा। अजीब है भाई। तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, भाई, ठीक है, तू हे चले जा भगवान भाई। भाई, अब इसके कोई बाद ये बोला नहीं ना सुधरेगा अकेले। यार। चले जा जा भाई, भाई, जा। सही में अकेले तो भेज देंगे तेरे को। तू अबे जा ना। तू जा भाई, घुसंड तो मार बोल इसको। रहा जाने के लिए। हाँ, उसको जा फिर जा। भाई, दूसरों को बोल रहा। अजीब है भाई। तू एक चिल्लाया काम भाई। करो भाई, हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, ठीक है, तू चले जा। हाँ यार, भाई, जा अब- जा, अब इसके इसके बाद बाद ये नहीं सुधरेगा यार। जा भाई, जा। सही में अकेले तो भेज देंगे तेरे को। तू जा ना। तू जा भाई, घुसंड तो मार बोल इसको। रहा जाने के लिए। हाँ उसको अबे, अबे तेरे को मारूंगा दूसरों को घुसंड बोल भाई, रहा। लात घुसे दोनों, समझ रहे है? काम करो भाई, मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेले करने दो। हाँ, ठीक है, तू चले कैसी जा। बात कर रहा हाँ, है भाई, यार, ये जा, वायलेंस जा, पे आ गया। चल जा, ये नहीं अकेले। सुधरेगा यार। जा भाई, जा। सही में अकेले तो भेज देंगे तेरे को। तू अबे जा ना। तू जा भाई, घुसंड मार बोल रहा इसको। जाने के लिए। हाँ, उसको अबे, अबे तेरे को मारूंगा दूसरों को घुसंड बोल रहा। भाई, लात घुसे दोनों,
अबे समझ ओ रहे? काम करो भाई। तेरे को मेरे को
लाठी से मारूंगा भाई मैं पीछे। कैसी बात कर रहा है भाई, ये वायलेंस पे आ गया। तो खुद बात कर रहा है तू लात मारने की, मैं ना करूं? घुसंड मार इसको। उसको अबे तेरे को मारूंगा घुसंड भाई, लात घुसे दोनों। अब ज्यादा हो रहा है भाई, मैं आ जाऊंगा वहीं पे, तेरे को लाठी से मारूंगा भाई मैं पीछे। अच्छा लाठी से मारेगा क्या? तो रुक भाई, तो रुक, खुद लाठी से मारे, रुक भाई, लात मारने की मैं ना करूं? रुक भाई, मैं लेके आ रहा हूं, मैं तलवार लेके आ रहा हूं। तेरे को मारूंगा घुसंड भाई, लात घुसे दोनों। अब ज्यादा हो रहा है भाई, मैं आ जाऊंगा वहीं पे, तेरे को लाठी से मारूंगा भाई मैं पीछे। अच्छा लाठी से मारेगा क्या? तो रुक भाई, तो रुक, खुद लाठी से मारे, रुक भाई, लात मारने की मैं ना करूं? रुक भाई, मैं लेके आ रहा हूं, मैं तलवार लेके आ रहा हूं। तेरे को मारूंगा घुसंड भाई, लात घुसे दोनों। हाँ भाई, क्या बोल रहा था? वहीं पे तेरे को लाठी से मारूंगा भाई मैं, ये देख रहा है? अच्छा लाठी से मारेगा क्या वो भाई? तो रुक, क्या बोल रहा है? रुक भाई, लात मारने की मैं ना बोल, रुक भाई, लेगा, मैं लेके आ रहा हूं, मैं तलवार लेके आ रहा हूं। ले, मैं भी लाया भाई तलवार, आजा शॉर्ट फाइट। क्या बोल रहा था? वहीं पे आजा, लाठी से मारूंगा भाई मैं, आजा शॉर्ट फाइट, आजा। लाठी से मारेगा क्या वो भाई? तो रुक, क्या बोल रहा है? रुक भाई, लात मारने की मैं ना बोल, रुक भाई, लेगा, आजा आजा, तलवार है मेरे पास, मैं भी लाया मारते रह, आजा शॉर्ट फाइट, आ जाओ आजा, लाठी से मारूंगा भाई मैं, आजा शॉर्ट फाइट, आजा आजा। क्या वो भाई? तो रुक, बता, रुक भाई, कौन आएगा पहले बता? रुक भाई, लेगा, आजा तलवार, आजा तू आ, पहले तू आ, शॉर्ट फाइट, आ जाओ आजा फाइट, आजा। अबे आ ना फिर भाई, खाली दिखा क्या रहा है? बता, कौन आएगा पहले बता? लेगा, खुद ही तो बोल रहा, तू आजा तू आ, पहले तू आ, नहीं पहले तू आ, आजा तू आ ना पहले, आजा फाइट, आजा। अबे आ ना फिर भाई, खाली दिखा क्या रहा है? बता भाई, मैं दिखाने में चला भी दूंगा, आजा। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू बोल रहा है तू आजा, तू आ, पहले तू आ, आजा तू आ ना पहले, अरे पहले तू आ, आजा। मैं क्यों आ ना फिर भाई, खाली दिखा क्या रहा है? बता, मैं चला दिखाने में चला भी दूंगा, आजा, चला दूंगा। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू बोल रहा है तू आजा, तू आ, पहले तू आ, आजा तू आ ना पहले, तो तू आ पहले, तू आ, मैं क्यों आ ना फिर भाई, खाली मैं भी नहीं आऊंगा फिर, मैं चला दिखाने में चला भी दूंगा, आ चला दूंगा, तो चला फिर। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू बोल रहा है तू आया, पहले तू आ, पहले तू आ, पहले तू आ ना पहले, तो तू आ, नहीं तू आ, मैं क्यों आ ना फिर भाई, हाँ तो मैं भी नहीं आऊंगा फिर, मैं चला दिखाने में चला भी दूंगा, आ जा, तो चला फिर। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू बोल रहा है तू आया, पहले तू आ, किसी का दम नहीं है, कोई नहीं आने वाला, तू आ पहले, तू आ ना पहले, तो तू आ, नहीं तू आ, मैं क्यों आ ना फिर भाई, हाँ तो मैं भी नहीं आऊंगा फिर, बताओ भाई बताओ, तो चला नहीं है। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू बोल रहा है तू आ ना भाई, तेरे किसी का दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आने वाला, तू आ पहले, तू आ ना पहले, भाई हाथ दुख गया, हाँ तो मैं भी नहीं आऊंगा फिर, बताओ भाई बताओ, तो चला नहीं है। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू आ भाई, तू आ ना भाई, तेरे किसी का दिक्कत नहीं है, भाई तू आ भाई, तू आ पहले, तू आ ना पहले, भाई हाथ दुख गया, हाँ तो मैं हाथ दुख गया ना, बस इतना ही दम था, बताओ भाई बताओ, तो चला नहीं है। खुद ही तो बोल रहा, तू आजा, तू आ भाई, तू आ ना भाई, तेरे किसी का दिक्कत नहीं है, भाई तू आ भाई, तू आ पहले, तू आ ना पहले, मैं नहीं आ रहा, अब मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, दुख गया ना, बस इतना ही दम था, नहीं मैं नहीं आऊंगा, बताओ, तो चला नहीं है, ठीक है नहीं आ रहा, तू आ भाई, तू आ ना भाई, तेरे किसी का दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा मैं नहीं आ रहा, तू आ पहले, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा, अब मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, दुख गया ना, बस इतना ही दम था, नहीं मैं नहीं आऊंगा, बताओ, तो चला नहीं है, ठीक है नहीं आ रहा, देख कोई भी नहीं आएगा अब, तू आना भाई, तेरे किसी का दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा मैं नहीं आ रहा, नहीं मत बताओ भाई, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं आ रहा, दुख गया ना, बस इतना ही दम था, नहीं मैं नहीं आऊंगा, बताओ, तो चला नहीं है, ठीक है नहीं आ रहा, देख फालतू की बहस करवा लो खाली, मैं बोल रहा मैं नहीं आ रहा, नहीं मत बताओ भाई, कौन वो पीछे वाले क्या कह रहे, तब से तू आ भाई, मैं नहीं आ ही नहीं पा रहे वो आगे तक, नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो चला नहीं है, ठीक है नहीं आ रहा,
देख फालतू के बहस करवा लो खाली। मैं बोल रहा मैं नहीं आ रहा, नहीं मत मैं जाओ भाई। कौन वो पीछे वाले क्या कह रहे हैं तब से तू आ वो कह रहे हैं कि भाई तू आ कह रहे वही नहीं आ रहा। अरे भाई उनको ऐसे ही है भाई, ठीक है नहीं आ रहा। देख फालतू के बहस करवा लो खाली, वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चला जा। नहीं मत मैं जाओ भाई। कौन वो पीछे वाले क्या कह रहे हैं तब से तू आ वो कह रहे हैं कि भाई तू आ कह रहे वही नहीं आ रहा। अरे भाई उनको ऐसे ही है भाई, रहने दो भाई उनको, साइड करो। देख फालतू के बहस करवा लो खाली, वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चला जा। नहीं चलो मेडिटेशन। पीछे वाले क्या कह रहे हैं तब से तू आ वो कह रहे हैं कि भाई कहने दो भाई मेडिटेशन करते हैं वही नहीं आ रहा। अरे भाई उनको ऐसे ही है भाई, रहने दो भाई उनको, साइड करो। देख फालतू के बहस नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन। चलो मेडिटेशन हाँ जाओ जाओ। क्या कह रहे हैं तब से तू आ वो कह रहे हैं कि भाई कहने दो भाई मेडिटेशन करते हैं, करने दो भाई उनको ऐसे ही है भाई, रहने दो भाई उनको, साइड करो। देख फालतू के बहस नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन चलो मेडिटेशन हाँ जाओ जाओ। ओ वो कह रहे हैं कि भाई करने दो भाई उनको ऐसे ही है भाई, आ जान दो सबको, साइड करो। देख फालतू के बहस नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन चलो मेडिटेशन हाँ जाओ जाओ। ओ वो करने दो भाई इसकी तो आ जान दो सबको, साइड करो। देख फालतू नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन चलो मेडिटेशन। अभी आए नहीं है वो, फिर से दिक्कत करेंगे। ओ करने दो भाई इसकी तो आ जान दो सबको, साइड करो। नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन। अरे यार अभी आए नहीं है वो, फिर से दिक्कत करेंगे। सुर तो लगाने दो भाई, करने दो भाई इसकी तो आ जान दो सबको, साइड करो। नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन। अरे यार अभी आए नहीं है वो, फिर से चिल्ला मत भाई, सुर तो लगाने दो भाई, करने दो भाई इसकी तो आ जान दो। कैसे लोग हैं भाई, नहीं तो वही ना अपन मेडिटेशन करते हैं भाई, चलो मेडिटेशन। अरे यार अभी आए नहीं है वो, फिर से चिल्ला मत भाई, सुर तो लगाने चिल्ला रहा है। करने दो भाई इसकी रुको मैं देखता हूँ कौन चिल्ला रहा है। ओ कैसे लोग हैं भाई, नहीं तो वही ना मैं देख रहा हूँ। चलो मेडिटेशन। अरे यार अभी आए ये चिल्ला मत, ये चिल्ला रहा है इसको निकाल। यही रुको मैं देखता हूँ कौन चिल्ला रहा है। देख दो वही जो अभी बताया ना वही कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। देख अरे यार अभी देख वही चिल्लाया। हाँ ये चिल्ला रहा है उसको निकालो। यही अबे मैं नहीं हूँ भाई, मैं देखता हूँ कौन चिल्ला रहा है। देख दो वही जो अभी बताया ना वही कर रहा है। अबे नहीं वो चिल्ला, अबे मैं नहीं भाई वो चिल्ला रहा है भाई। देख अरे यार अभी देख वही चिल्लाया। हाँ ये चिल्ला रहा है भाई, निकालो। यही अबे मैं नहीं हूँ भाई, मैं देखता हूँ कौन चिल्ला, यही चिल्ला रहा है वही जो अभी बताया ना वही कर रहा है। अबे नहीं वो चिल्ला, अबे मैं नहीं भाई वो चिल्ला रहा है भाई। देख तू ही चिल्ला रहा है, मेरे को पता है, मैंने देखा है मैंने। देख वही चिल्लाया। हाँ ये चिल्ला रहा है भाई, चिल्ला रहा था भाई। यही अबे मैं नहीं हूँ भाई, मैं देखता हूँ कौन चिल्ला, यही चिल्ला रहा था, मैंने देखा है अभी देखा है, जस्ट अभी देखा। अबे मैं नहीं भाई वो चिल्ला रहा है। नहीं तू चिल्लाया, तू ही चिल्ला रहा है, मेरे को चिल्लाया मैंने, देखा है मैंने। देख वही चिल्लाया। हाँ ये चिल्ला रहा है भाई, चिल्ला रहा था भाई। यही अबे तू चिल्लाया भाई, मैं नहीं चिल्लाया, तू ही चिल्ला रहा था, मैंने देखा है अभी देखा है मैंने, जस्ट अभी देखा। अबे मैंने भी तेरे को ही देख रहा भाई तब से, तू ही चिल्ला रहा है, मेरे को चिल्लाया मैंने, देखा है मैंने। देख वही चिल्लाया। हाँ ये चिल्ला रहा है भाई, चिल्ला रहा था भाई। यही तू चिल्ला रहा है, अबे तू चिल्लाया भाई, मैं नहीं चिल्लाया, तू चिल्लाया। देखा है अभी देखा है मैंने, जस्ट अभी देखा। अबे मैंने भी देखा है, देख रहा भाई तब से, तू ही चिल्लाया। ओ मैं देख रहा भाई, तू चिल्लाया। ये चिल्ला रहा है भाई, चिल्ला रहा था भाई। यही तू चिल्ला रहा है, अबे तू चिल्लाया भाई, मैं नहीं चिल्लाया, तू चिल्लाया। देखा है अभी देखा है मैंने, जस्ट अभी देखा। नहीं भाई तू चिल्लाया भाई, देखा है, देख रहा भाई तब से, तू ही चिल्लाया। ओ मैं देख रहा भाई, तू चिल्लाया। जब सब देख ही रहे हैं तो भाई निकालो ना फिर। तू चिल्ला रहा है, अबे तू चिल्लाया भाई, मैं नहीं चिल्लाया, तू चिल्लाया। देखा
है अभी अभी देखा है मैंने जस्ट अभी देखा नहीं भाई तू चिल्ला है भाई देखा है देख रहा भाई तब से तू ही चिल्ला है ओ मैं देख रहा भाई तू चिल्ला है जब सब देख ही रहे हो भाई निकालो ना फिर हाँ निकालो तू चिल्ला रहा है तू चिल्ला है भाई मैं नहीं चिल्लाया यही जो बोला ना अभी तू चिल्ला उसी को निकाल सबसे पहले उसी को निकाल नहीं भाई तू चिल्ला है भाई देखा है देख रहा भाई तब से तू ही चिल्ला है ओ मैं यही है इसको निकाल तू चिल्ला है जब सब देख ही रहे हो भाई निकालो निकालो उसी को निकालो देखा ना तू चिल्ला रहा है निकालो निकाल दो मैं नहीं चिल्लाया यही जो बोला ना अभी तू चिल्ला हाँ वही वही वाला उसको निकाल नहीं भाई तू चिल्ला है भाई अबे सबने देख लिया तू ही चिल्ला रहा था हाँ यही है इसको निकाल निकालो जब सब देख ही निकालो भाई निकालो उसी को निकालो निकाल दो निकाल दो मैं नहीं चिल्लाया यही जो बोला ना अभी देख हाँ वही वाला रिपीट कर रहा है नहीं भाई तू चिल्ला है भाई अबे सबने देख लिया तू ही चिल्ला रहा था हाँ यही है इसको निकालो जब सब देख ही निकालो भाई निकालो उसी को निकाल दो मैं नहीं चिल्लाया यही जो बोला ना अभी देख हाँ वही वाला रिपीट कर रहा है नहीं भाई तू चिल्ला है भाई अबे सबने देख लिया तू ही चिल्ला रहा था हाँ यही है इसको निकालो सब देख ही निकालो भाई निकालो उसी को निकाल दो भाई निकाला नहीं जा रहा क्या तुम लोग से उसको निकाल दो मैं नहीं चिल्लाया यही जो बोला ना अभी देख हाँ वही वाला रिपीट कर रहा है नहीं भाई तू चिल्ला है भाई अबे सबने देख लिया तू ही चिल्ला रहा था हाँ यही है इसको निकालो सब देख ही निकालो भाई निकालो उसी को निकाल दो भाई निकाला नहीं जा रहा क्या तुम लोग से उसको नहीं निकाला जा रहा मैं जा रहा भाई यही जो बोला मैं जा रहा हाँ वही वाला रिपीट कर रहा है नहीं भाई तू चिल्ला नहीं मैं ही चला जा रहा भाई अबे सबने देख लिया नहीं मैं जा रहा निकालो सब देख ही निकालो भाई मैं जा रहा उसी को निकाल दो भाई निकाला नहीं जा रहा क्या तुम लोग से उसको नहीं निकाला जा रहा मैं जा रहा भाई आज जा अच्छा चल ठीक है तू ही जा तू जा नहीं मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा नहीं मैं जा रहा अबे चला जा भाई मैं जा रहा जा भाई निकाला नहीं जा रहा क्या तुम लोग से उसको नहीं निकाला जा रहा मैं जा रहा भाई आज जा अच्छा चल ठीक है तू ही जा तू जा अच्छा मैं क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा नहीं तू जा मैं जा रहा चला जा भाई तू जा तू तो बात कर रहा था ना जाने की जा भाई निकाला नहीं जा रहा तू जा भाई बिल्कुल नहीं निकाला जा रहा मैं जा रहा भाई आज जा अच्छा चल ठीक है तू ही जा तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा नहीं जा रहा मैं जा रहा चला जा भाई नहीं मैं नहीं जा तू तो बात कर रहा था ना जाने की हाँ तो अब मेरा माइंड चेंज हो गया अब तू बोल रहा है तू जाएगा तू जा निकाला जा रहा मैं जा रहा भाई आज जा अच्छा चल ठीक है तू ही जा तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा अबे तुम सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ नहीं मैं नहीं जा तू तो बात सब के सब निकलो यहाँ से हाँ तो अब मेरा माइंड चेंज हो गया अब तू बोल रहा है तू जाएगा तू जा नहीं तुम सब के सब जाओ चल ठीक है तू ही जा तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा अबे तुम सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ नहीं तू तो सब में तू भी आता है तू चले जा मेरा माइंड चेंज तू जा बोल रहा है तू जाएगा तू जा नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया तुम सब जाओ ठीक है तू ही जा तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा अबे तुम सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ नहीं तू तो सब में तू भी आता है हाँ सब में तू भी आता है जा जाएगा तू जा सही बोल रहा है नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया तुम सब जाओ हाँ भाई तू जा क्यों मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा हाँ जा सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ नहीं तू तो सब में तू भी आता है हाँ सब में तू भी आता है जा जाएगा तू जा सही बोल रहा है नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया तुम सब जाओ हाँ भाई तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा हाँ जा सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ अरे भाई सब में तू छोड़ो मैं ही जा रहा सब में तू भी मैं जा रहा मैं जा रहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं जा रहा तुम सब जाओ हाँ भाई अब नहीं हो रहा वैसे अब मैं जा रहा हूँ तू जा क्यों जाऊँ मैं ही चला जा रहा भाई जा ना फिर जा हाँ जा सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ अरे भाई सब में तू छोड़ो मैं ही जा रहा सब में तू भी मैं जा रहा तू जा रहा है ठीक है मैं जा रहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं जा रहा नहीं चल जाओ फाइनली चले जाओ मैं जा रहा हूँ नहीं तो फाइनली जा बढ़िया डिसीजन है गुड डिसीजन यू आर हाँ जा सभी चले जाओ भाई तुम सब चले जाओ अरे भाई सब में तू छोड़ो मैं ही जा रहा सब में तू भी मैं जा रहा तू जा रहा है ठीक है मैं जा रहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं जा रहा नहीं चल जाओ फाइनली चले जाओ मैं जा रहा है
नहीं तो फाइनली जा। अबे कौन जा रहा है? गुड डिसीजन यू आर। हाँ जा जा। सभी चले जाओ भाई, तुम सब जा कौन रहा है भाई? अगर जा रहे हो तो सही जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? ठीक है जा। मैं जा रहा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? चले जा। अबे कौन जा रहा है? गुड डिसीजन यू आर। वो जा रहा है, वो बोल रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है। अरे वही जा रहा है पर लेकिन बोल ही नहीं रहा कुछ। जा रहे हो तो सही जा रहा है। सही जा रहा है, चले जा। तू जा रहा है? ठीक है जा। मैं जा रहा, मैं आखिरी। अरे नहीं वो जा रहा है भाई। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? वही चले जा। चले जा भाई। कौन जा रहा है? गुड डिसीजन यू आर। वो जा रहा है, वो बोल रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है। अरे मैं नहीं ये बोल रहा भाई कुछ। जा रहे हो तो सही जा रहा है। सही जा रहा है, चले जा। तू जा रहा है? ठीक है जा। मैं जा रहा, मैं आखिरी। अरे नहीं वो जा रहा है भाई। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? वही मैं नहीं, तू जा रहा है भाई। चले जा भाई। कौन जा रहा है? गुड डिसीजन यू आर। वो जा रहा है, वो बोल रहा है तू जा रहा है। कौन रहा है? अरे मैं नहीं ये बोल रहा भाई। मैं नहीं तू बोल रहा है। सही जा रहा है, चले जा। तू जा रहा है? ठीक है जा। मैं जा रहा, मैं आखिरी। अरे नहीं वो जा रहा है भाई। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? वही मैं नहीं, तू जा रहा है भाई। चले जा भाई। कौन तू जा रहा है? ओए अभी तूने बोला। वो जा रहा है, वो बोल रहा है तू जा रहा है। नहीं भाई वो बोला खुद ही। मैं नहीं ये बोल रहा भाई। मैं नहीं तू बोल रहा है। ये बोला भाई अभी। जा रहा है, चले जा। तू जा रहा है? ठीक है जा। मैं जा रहा, मैं आखिरी। अरे नहीं वो जा रहा है भाई। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? वही मैं नहीं, तू जा रहा है भाई। चले जा। अबे यही जा रहा है, इसने बोला अभी। तूने बोला वो जा रहा है, वो बोल रहा है। देख बोला तू जा रहा है। नहीं भाई वो बोला भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई। मैं नहीं तू बोल रहा है। ये बोला तू बोल रहा है भाई। सबने सुना है। मैं जा रहा, मैं आखिरी। अरे नहीं वो जा रहा है भाई। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा रहा है, तू जा रहा है। इसने बोला अभी तू जा रहा है, वो बोल देख बोला तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा बोल रहा है। ये बोला तू बोल रहा है भाई। सबने सुना है। हाँ तो सबने सुना है ना, तो तू चले जा। अबे कितनी बार आखिरी बार बोलेगा भाई? तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा रहा है, चले जा भाई। तू जा रहा है, वो बोल देख बोला तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा, तू जा, तू जा, तू बोल रहा है भाई। सबने सुना है। हाँ तो सबने सुना है ना, तो तू चले जा, तू चले जा। हाँ तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा, तू जा, तू जा, तू बोल रहा है भाई। सबने सुना है। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई, तू चले जा। हाँ तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। नहीं भाई तू जा, तू जा, तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं ही चला जा रहा भाई। पराया दूजा तीजा सबने सुना है ना, तू जा भाई। मैं जा रहा, फिर तू चले जा। हाँ ठीक है मैं चला जा रहा। तू जा रहा है, तू जा रहा है भाई। तू जा भाई, तू जा रहा है, तू जा, तू जा रहा है, तू जा रहा है। चलो अच्छा है, बाकी सब चलेगा। तू जा भाई, तू जा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
हेलो गाइस, आपको तो दिख रहा ही होगा कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे चेहरे से आपको लग ही रहा होगा कि मैंने बिल्कुल भी क्रिंज कुछ देखा नहीं है। एकदम बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड यार, तुमने वो रील्स देखी है जिसमें लोग अपना कुछ तो डायलॉग या कुछ तो छोटा मोटा ऐसे डाल देते हैं एंड देन सडनली म्यूजिक बज जाता है, कोई एकदम सैवेज सा गाना चल रहा होता है, उनकी रैंडम क्लिप्स चल रही होती है बस, एंड द मैसेज दैट वी आर सपोज्ड टू रिसीव इज दैट, ओह माय गॉड ही इज सच अ कूल डूड, ओह आई विश आई वाज लाइक दैट। ये सारी रील्स सबने देखी है राइट। रियलिटी शोज के आने के बाद तो ये सब फेमस ही हो गया, क्योंकि किसी के पास कुछ कंटेंट होता नहीं है बनाने को तो वो यही कचरा बनाता है। सही बात है। बिकॉज लेट्स फेस इट, इट्स नॉट दैट टफ राइट। तुमने कुछ भी बोला, भले ही वो इम्पैक्टफुल लाइन हो ना हो, उसके आगे म्यूजिक के साथ साथ तूने अपनी ही रैंडम वीडियो फ्रेम्स डाल दी ऐसे ऐसे करते हुए देखते हुए, तो एक माइंडलेसली स्क्रॉल करने वाले इंसान को लगेगा कि ओ मे बी ही इज अ ग्रेट गाय, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट कूल लग रहा है। ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, ये भी है एक आर्ट। बोलते हुए भी शर्म आ रही है, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ फुद्दू आर्ट, तो लेट मी जस्ट कॉल इट लाइक फार्ट। नाउ इमेजिन फार्ट जैसी चीज जो इतनी आसान है, इसमें भी ये भी कोई इतनी घटिया तरीके से कैसे कर सकता है, वो आज हम देखेंगे। टुडे वी आर लुकिंग एट आशिफ मीढा। उन्होंने खुद ही लिखा है अपने बायो में, व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइस। आपकी एडवाइस क्यों लूं मैं, और डिस्क्रेशन आपने दे ही दिया है तो फिर मतलब मेरे पास फ्री विल है कि मैं इसके बारे में जो समझना चाहूं समझ सकता हूं, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। एक सेकंड गाइस, मुझे उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि भाई जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 55% सब्सक्राइब ही नहीं है। मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है भाई। हमारे 1 मिलियन हो चुके हैं, बस जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो वीडियो, आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, वो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, फ्री है, कम ऑन, एक बार ऐसे नीचे में सब्सक्राइब कर दो फिर वीडियो देखो। चल ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। कुछ सैवेज लग रहा है गाइस, वो स्कल इमोजी आ गया है, कुछ सैवेज होने वाला है। पढ़ पाए मेरे बारे में जी 34C विक्टोरिया सीक्रेट। आपको कैसे पता? पहले तो ये हाथ पढ़ रहा है आदमी, और आई डोंट नो वेयर हैंड रीडिंग, पाम रीडिंग में ब्रा साइज कहां से आता है, आई हैव नो क्लू गाइस। वो तो आपके ये तो सही बात है, पड़ी हुई दिख गई। अच्छा, इसका मतलब आप हाथ नहीं देखते? जी हाथ कौन देखता है, मैं तो सीना देखता हूँ। ये सड़ी हुई चीप लाइन पे कोई कैसे सैवेज म्यूजिक लगा सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी भाई, मुझे मान लेना चाहिए था, आपने व्यूअर डिस्क्रेशन दिया था, मेरी गलती, मैं फिर भी आगे बढ़ा, मेरी गलती, मैंने फिर भी रील खोली। आई एम श्योर दिस इज लाइक अ स्केच। ओ माय रील बर्बाद हो चुके हैं भाई आजकल। जा रहा हूँ, बट ये कौन सी कॉमेडी है जहाँ पे पाम रीडर ब्रा का साइज डिस्कस कर रहा है, और फिर लड़की जब चौक जाती है उसको कैसे पता चला, तो बोलता है अरे मैंने आपके घर में देखा था, और फिर देन शी इज लाइक ओ सो यू डोंट रियली रीड पाम, ये सब बकवास करते हो आप, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम मेरा। तब वो कहता है अरे हाथ कौन देखता है, हम तो सीना देखते। अबे इसका तो मतलब है आप क्रीप हो ना, तो इसमें प्राउड होने वाली क्या बात है? यो मारना, दोनों मारना, गाना लगाने की क्या बात थी इसमें? ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। खुले 2 थप्पड़ मारने से पहले भी हेजिटेट नहीं करेंगे। वैसे नेक्स्ट टाइम अगर आपको कार्डियो करने की जरूरत हो ना, तो याद रखना 2nd फ्लोर भी खुला है आपके लिए। वो मेरे पास ना ट्रेडमिल है मैं तो उसे यूज करती नहीं हूँ, तो आप आ जाइएगा। वो उसको देख के लगता है वो यूज करता है ट्रेडमिल। कम ऑन मैन, आई एम नॉट शेमिंग एनीवन। अगर तुम लोग भी डबल मीनिंग में ये सब सेक्सुअल इनुएंडोज लगा सकते हो, तो मैं भी ऐसी फालतू की बातें कर ही सकता हूँ। नहीं, हमने तो नहीं लगाया भाई डबल मीनिंग। आपको अगर कार्डियो करना हो तो अच्छा, ये सब ऐसे तुम उस आदमी से कह रहे हो जिसके मन में सिर्फ सीना सीना ब्रा साइज ये सब चलता है। जॉन सीना। फिर तो जल्दी आऊंगा मैं आपके यहाँ चढ़ने, ट्रेडमिल पे। जो जल्दी आऊंगा चढ़ने आपके ट्रेडमिल पे। क्लियरली उसको पता ही नहीं है कि ट्रेडमिल पे चढ़ा नहीं जाता है, ट्रेडमिल पे चला जाता है। ट्रेडमिल में तो सोते हैं, उसको नहीं मालूम होगा ये सब, बट एटलीस्ट हमें इससे ये पता चलता है कि दोनों ही धरकी है। लड़की आशिफ को कार्डियो करने घर पे बुला रही है, और आशिफ को कार्डियो सुनते ही सेक्स समझ आता है। सही है। आज मैंने खुद फ्रूट्स खा के अपनी भूख मिटाई है। अच्छा, तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं आपके पास? वो तो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपके पास ऑरेंजेस होंगे। बोल रहे क्या भगवान, मुझे सुनना भी नहीं है भाई। ये क्या, ये कौन सा ह्यूमर है? ये कौन से फ्रूट्स है? ऑरेंज। आंखों से जो तूने छेड़ा है ना भाई, मेरे को अभी डर लग रहा है। ऑरेंजेस। एंड गाइस दैट्स नॉट इट। मैंने कैप्शन में उस जोक को वापस मारने की कोशिश की है। ऑरेंजेस एनीवन? बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा? सुनना भी नहीं है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज, सॉरी। मेहमान नवाजी गॉन रॉन्ग। आपने मेरी फ्रेंड को क्या बोला है? जरूर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। बैगन। यार मैंने तो उल्टा मेहमान नवाजी। खुद ही बैंगन लग रहा भाई ये तो। मैं उधर हंसना भूल गया। अरे जहाँ पे वो बैगन, वो जो आवाज आए वो वाला बैगन हंसना भूल गया। एक मिनट वापस देख रहा हूँ, सॉरी गाइस। आपने मेरी फ्रेंड को क्या बोला है? जरूर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। बैगन। बैगन। बोल रहे क्या, सुनना ही नहीं दे रहा। बंदा चाय पी रहा होता है और मेहमान आ जाए तो बंदा क्या बोलता है? चाय पी लो। हाँ। बंदा खाना खा रहा हो, मेहमान आ जाए तो बंदा बोलता है खाना खा लो जी। हाँ। तो मैं लेटा हुआ था, वो आई, मैंने कहा लेट जाओ साइड में। ये भगवान,
हे प्रभु इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इसने दिया था, मैंने ही एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने इसकी बात नहीं मानी। सही है, ऐसा ही होता है भाई। मैं अगर संडास में हूँ और कोई घर पे मेहमान आ जाए तो मैं उनको संडास में बुला लेता हूँ। दाल चावल कुछ तो दे दे। घर में तीन बच्चे भूखे बैठे। मुझे लगा था भाई एक दिन तो ये लोग 3 बच्चे करने की क्या जरूरत थी भाई? 3 बच्चे भूखे बैठे हैं। रुको 1 मिनट। अच्छा ये स्कैम है। ये लो, और चौथा मत करना। अरे बाप रे। मैं क्यों रील खोलता ही हूँ ये सोच के कि ये नॉर्मल रील होगी, मैं भूल ही जाता हूँ कि एंड में कुछ सैवेज गरीब को कॉन्डम दे दिया। वाओ, ओह माय गॉड ब्रो, क्या आपने एक रास्ते पे भिखारी को कॉन्डम दे दिया? ओह माय गॉड ब्रो, यू आर सो कूल मैन। काश मैं भी आपसे सीख पाता यार, आप तो कितने एकदम चल इमोजी हो यार आप तो एकदम। आशिफ और उसकी वाइफ दोनों का ह्यूमर कितना मैच करता है। दे आर लिटरली मेड फॉर ईच अदर भाई, सो क्यूट। ये तुमने अभी मुझे प्रपोज किया क्या? And I'm really अबे sorry, यार मेरे पास अभी सर ring दर्द नहीं होने है लग गया भाई। कोई बात नहीं, वीडियो के अंदर में देखना। ऐसा करो, मुझे ना ये When Valve announced the Steam Machine, everybody, including Valve, saw it primarily as a competitor to living room consoles like the PlayStation 5. But if you ask me, everyone, including Valve, got it wrong. To be clear, it's perfectly okay for couch gaming. It's just that, in my opinion, as a desktop PC or as a workstation, it's a way better product. Maybe the best desktop PC that I've ever used. To be clear, it's not the fastest. Oh, that's my Teams. Yeah, you might want to close that. I've been daily driving it. To be clear, it's not the fastest or the flashiest. It doesn't offer industry-leading upgradability or repairability. And the price is a big challenge. But the thoughtful hardware design and the seamless integration with Valve's SteamOS makes this the closest thing that I have ever experienced to a PC Mac Mini. And it's made me go from, well, I'd like to like Linux, to I don't know how I can go back to Windows now. Guys, the year of the Linux desktop is 2026, and the Steam Machine is leading the charge. And if you don't believe me, stick around for a few minutes, and I think I can probably change your mind. I can also tell you about our sponsor. Ugreen. Their DXP 2800 GT is a... If you somehow missed our previous coverage of the Steam Machine, everything I've already said about it remains true. What Valve's designed here is an outstanding little desktop cube PC that manages to offer up some expansion in the form of an M.2 slot and 2 DDR5 SODIMM slots, along with reasonable repairability through a partnership for replacement parts with iFixit, and an unassuming design that manages to be as quiet as it is adorable. The one area where it falls short, ironically, is gaming performance. But that's not really an issue when I'm using it as a workstation, and for day-to-day use, it doesn't feel slow. And a big part of that comes down to the excellent SteamOS software. Now, it's worth getting this out of the way early. A lot of what I'm about to say about SteamOS is really about Arch Linux, the KDE Plasma desktop environment, or Flatpak, the package manager that makes browsing and installing applications on Linux very App Store-like. But Valve has made meaningful contributions to making these things as good as they are, including sponsoring upstream development, and, maybe more importantly, Valve is doing the work of curating all of the elements that make up SteamOS and validating the experience of how they work together. Take, for instance, the switching process between the default gaming SteamOS interface and the desktop one you're looking at here. All it takes is a quick reboot to desktop mode button, and within seconds, game scope is gone to be replaced by a lightly customized KDE Plasma that is made to be just so friendly to Windows refugees like myself. I would say that customizing it to your liking should take no longer than like 10 to 30 minutes. Like my oddball 6K by 2.5K monitor resolution was detected immediately, and while I was checking that, I was struck by just how simple the configuration menus are. Like,
why does Microsoft feel the need to hide HDR settings within a submenu? And for that matter, why is refresh rate an advanced option? It's 2026. This is more like it. Oh, and by the way, thank you for having pointer acceleration off by default. Like, duh, right? Grabbing my frequently used programs was painless. Chrome for browsing, Zap Zap for WhatsApp messages, OBS Studio for screen cap, VLC, a calculator, since one wasn't included for some reason, and Windows snapping works exactly like you'd expect. Actually, better than Windows in some respects. Have you guys ever had a window that's like stuck, snapped to a virtual display somewhere off screen and thought, oh, darn it, now is it Control arrow or is it Windows arrow to move it over? Well, on SteamOS, I don't know, just close it and reopen it. A freshly launched application will pop up somewhere sensible, like, I don't know, maybe in the middle of the screen. Love it. The whole experience feels familiar but better, with thoughtful features like wiggling the mouse to embiggen it like on a Mac, the ability to ping your speakers simply by clicking the volume slider rather than dragging it. Why did you remove that functionality, Microsoft? And, barring the odd weird frame drop, well-tuned animations that look and feel modern, but are fast and subtle enough that they don't get obnoxious. A recent Samsung One UI update is actually the perfect example of the kind of animation bloat that SteamOS eschews. Why are 5 tiles wiggling every time I swipe a notification? That's not to say that everything went perfectly. This is my desktop setup at work. Like that blissful looking mousepad, by the way? Coming soon, ltdstore.com. Anyway, I ditched having a desktop the better part of a year ago because I have 2 desks at our 2 offices, and it's way easier for me to carry all of my stuff around with me on a laptop. So I'm a big fan of USB-C docking in order to hook up all my peripherals and charge my battery. Well, the Steam Machine has a USB-C port, and it's pretty high speed at 10 gigabit per second, but unfortunately, it is not wired up as a display output, nor does it have USB 4 capabilities to allow it to work with Thunderbolt peripherals. And this is a great example of the kind of thing that can end up overlooked in the rush to get an embargo day review out, but might come up during the weeks or the months that you spend daily driving a device later. It's unlikely to be a huge issue for you, since you likely won't be carrying your Steam Machine back and forth to the office in your backpack, but still, I wouldn't have minded a better Type-C port, or, while we're at it, a 2.5 gig network port. I suspect Valve knew what they were doing when they focused instead on high-speed wireless networking and left off 2.5 gig LAN. I mean, they do, after all, run the Valve hardware survey, but on a CPU with 6 Zen 5 cores, I should be able to exceed gigabit download speeds without buying a separate 2.5 gig USB NIC. On the subject of networking, you might recall that Elijah really struggled with accessing network shares in our recent Linux Challenge series. Mounting network locations as though they are a physically attached disk is not well supported, especially on immutable OSs at this time. I'm happy to report though that the KDE team has found funding to chase down this issue, and I'm also happy to report that if your needs are less complicated than his, on SteamOS, SMB shares are easy to find, authenticate, and bookmark for future use. Though, I did hit a small snag when I was transferring files off my phone. First of all, I want to shout out the way that I get prompted when I drag and drop for whether I want to copy paste or cut paste. I really like that. But what I don't like is where the devil are my thumbnails? It looks like Dolphin, the default file explorer, needs to be configured in order to show previews for network files. And you can tell it anything under some given size, which fixed it, but I did find it to be a little slow to generate them sometimes. The bigger issue when I was transferring files was when I plugged in my other phone from Apple. Turns out that out of the box, iPhones can't be accessed over USB at all. And this is a real problem for ingesting video. KDE Connect was the most common suggested fix, and it's a pretty neat piece of software that integrates with your iPhone wirelessly to provide a more seamless experience. And I ended up having to do the transfer on Winblows. Since I was playing around with file transfer,
This video called "The Gaming Market is Starting to Break" got 5 million views in 4 days. Let's talk about it. This is a PlayStation 5. It came out in 2020 at $399, and now, even though it's 6 years old, it costs $599. I don't even remember the PS5 ever costing $399, but to increase by 40% in 2 years is fucking psychotic. Is that really the same edition? That's nuts. Nintendo's announced a price hike to their Switch 2. The Xbox has raised its price 3 times since 2025. Jesus! And the scariest part is not even the extra money, it's what's happening around it. Because, dude, I guarantee you the next big console release will most likely break $1,000. And I bet you they'll release an enhanced version of it that's $1,200. This is how things are going. It's horrifying, man. You really should just invest in a PC now. At the same time, PlayStation announced it's going to stop shipping physical game discs entirely. Xbox has axed 5 of its big game production studios and fired thousands of people in what's being called one of the biggest single layoffs in gaming history. I think that's honestly fine to, like, release devs if they're not doing shit. I don't really care about big industry layoffs. You know, cut the fat. That's what happened to Twitter, and now it's infinitely better. While Nvidia has started capping how many hours a month you're allowed to play when using their services. The craziest part? Everything I've just mentioned is linked. This is actually all part of a single chain reaction that's already started in the gaming industry. And I don't see where it stops. Jesus! To understand what I mean, if we were to take apart this PlayStation 5, inside, you would find 16 gigabytes of RAM, or memory, which it needs. Okay, that's nothing. 16 gigs is fucking nothing. I'm honestly shocked by how low that is. To be able to run games. A single AI chip from Nvidia, the Blackwell Ultra, requires 288 gigabytes of memory. 18 PlayStation 5's worth of RAM. Now, it is a fancier type of memory than what's in your PlayStation, but it's made on the same production lines by the same companies. So every gigabyte that goes into this is a gigabyte that can't be made for a PS5. And the problem is when AI companies buy chips for their data centers, they don't just buy one. Chips are sold in racks, each containing 72 of those AI chips. So one rack equals 1,300 PlayStation 5s. Jesus! Oh dear. And they don't just buy one rack. Racks are purchased in clusters. Last year, Microsoft switched on their first big cluster to help power the growing needs from OpenAI's ChatGPT models. That cluster was 64 racks in one go. Jesus! 83,000 PlayStation 5s. And here's where it gets truly terrifying. Even that was barely a test run compared to the scale on which these new servers are being set up now. Just a year later, OpenAI is currently building out the Stargate campus that will reportedly hold 100 times the number of racks as that first purchase. 8.3 million PlayStation 5's worth of memory in one company's one site. That's almost enough PlayStations for every single household in the entire continent of Australia. And so when you factor in that there are also other AI companies, Meta and their even larger Prometheus site, xAI's Colossus, supposedly the world's most powerful data center, Amazon, Google, and every other big tech company who's galloping headfirst into the AI wars, we have reached a point where AI data centers are now estimated to be swallowing up 70% of the world's memory output. 70% is going into building services that we'd barely heard of 5 years ago. And that has left everything else on the planet that needs memory, every phone, every PC, every car, every console, having to now fight over the small and rapidly shrinking pool that's left. Oh, dude, I had to wait 3 months to get my fucking Tesla. Because getting any amount of, like, data chips is, like, fucking impossible. Yeah, no, there's a lot of pros and a lot of cons. I am very pro AI just for the reason of in mineral science, AI was applied, and we jumped forward 250 years of research, pretty much overnight, which is insane. As well as they're using AI to help treat things like pancreatic cancer. Because the way that CAT scans go is they take a screenshot of your body. And the reason why pancreatic cancer surgery is so difficult is because your organs are constantly shifting. So this screenshot can show you where the cancer is, and then you have to laser into it, hope the organs don't shift. That way you get rid of the cancer and the person can heal. But if they shifted, you could have just caused internal bleeding and they're just going to die. But with AI, they're able to make your whole body like a hologram and see in real time exactly where the cancer can be moving, thusly making pancreatic cancer a lot less lethal. And it is the most deadliest cancer.
So while things like having supply and demand issues with like Teslas or iPhones and PS5 is a negative, I do believe that AI, if we win the race, could be providing a massive generational leap in all fields. And I also would really like the United States to win the war on AI. That way the data is drawn from here rather than China win and all the data be drawn from there and them cause more propaganda wars like they did for BLM. So there's a lot of pros, there's a lot of cons. Whether you hate it or love it, I don't really care. So this is the new demo for Unreal. Creative director at Neon Giant, here to talk about No Law, the next game from our studio. Okay. In our first game, The Ascent, our small team pushed the out-of-the-box UE4 tech to its limit to make a highly detailed, lived-in cyberpunk world. Cool. For our new game, is social media. It's even on Steam's front page. ये है 5090 4.5 लाख दुनिया का सबसे पावरफुल कंज्यूमर जीप और ये है AMD का R9700 3 गुना सस्ता। दोनों में 32 GB VRAM है, बिल्कुल सेम AI मॉडल्स को लोकल चलाने के लिए, चैट GPT को लोकल पीसी के अंदर चलाने के लिए, ये सब कुछ है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि एनवीडिया तुमसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस बात के चार्ज कर रहा है? भाई एनवीडिया में तो क्यूडा है, क्यूडा AMD में तो AI चलता ही नहीं। अच्छा, मैंने दोनों कार्ड्स के ऊपर सेम मॉडल चलाए हैं, सेम टेस्ट किया, टोकन पर सेकंड गिने, बिजली का मीटर देखा है और जो रिजल्ट आया वो एनवीडिया फैंस को हिला देगा, इवन AMD फैंस को। बस एक नंबर याद रखना, 91.8%। वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि ये नंबर इतना खतरनाक क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये कंपैरिजन है ही क्यों। देखो, जब तुम चैट यूज करते हो, जो मॉडल है OpenAI का, तो वो किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन अब लोग मॉडल्स अपने पीसी पर लोकली रन करते हैं। तुमने देखा होगा कि मी ने इतना बढ़िया मॉडल बना दिया जिसने क्लॉड को आउटशाइन कर दिया। वो सारे मॉडल जो हैं लोकली रन होते हैं। अब इनका फायदा ये है, एक तो ये प्राइवेट है, अनलिमिटेड है और तुम्हारा डेटा ऑफ कोर्स बाहर लीक नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं लोकल एआई। एंड लोकल एआई का रूल नंबर 1 है कि VRAM में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो मॉडल फिट इन कर जाए। ऐसे समझो कि एक बड़ा सा वेयर हाउस है, ट्रक है जो वेयर हाउस के अंदर जाएगा। अब अगर वेयर हाउस ट्रक से छोटा है तो फिर ट्रक कैसे घुसेगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है उसे अंदर घुसाना, राइट? सॉरी, आई नो मेड इट वर्स बट दैट्स द ट्रूथ। अब थोड़ा टेक्निकली समझो, 8 GB वाले जो कार्ड्स हैं उसमें छोटे मॉडल्स आते हैं, 7 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल, जो कि बहुत ऐसे बच्चों वाले मॉडल्स। 16 GB कार्ड के अंदर 13 से 14 बिलियन पैरामीटर वाला आ जाएगा। उसके बाद 24 GB वाले में 32 बिलियन पैरामीटर वाला आ जाएगा, लेकिन इट्स लाइक पूरा फिट इन करेगा। वेयर हाउस का साइज मतलब एंट्री गेट उतना ही है जितना ट्रक है, तो एंट्री गेट पर ही फंस जाएगा। इट्स लाइक बिल्कुल स्टक। एंड आई डोंट नो, मेरे एग्जांपल सारे गलत क्यों जा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। जो 32 GB वाला है उसके अंदर 32 बिलियन वाला बहुत इजीली फिट इन कर जाएगा, इवन कि 70 बिलियन वाला भी फिट इन कर जाएगा कंप्रेस करके। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, एनवीडिया का सिर्फ एक ही जीपीयू है 5090 जो 32 GB के साथ आता है। AMD वाज लाइक कि 1.5 लाख में दे देंगे, हु केयर्स। अब सस्ता है तो फॉर श्योर स्कैम होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं और ये ट्रेड ऑफ समझाने इतने इजी नहीं है क्योंकि इसके डिटेल्स जानने बहुत जरूरी हैं। तो तुम्हें इन 4 वर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा, और एक बार ये जान लिए नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर तुम 99% लोग जो कमेंट सेक्शन में अभी मुझे गाली दे रहे होंगे उनसे समझदार बन जाओगे। फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि है ब्लैकवेल RDNA4। एंड ये सिर्फ ऐसे रैंडम कोड नेम्स नहीं है, ये चिप डिजाइन के नाम है। जैसे कि मारुति का लेट्स से इंजन प्लेटफॉर्म आता है हर साल, राइट? समथिंग लाइक दैट। अब एनवीडिया क्या करता है, इसको अपने साइंटिस्ट के नेम पे रखता है, जैसे कि पास्कल, ट्यूरिंग, एम्पियर, अडा लवलेस, आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी फॉर दैट अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। एंड नाउ इट्स ब्लैकवेल। अब 5090 जो कि मेरे पास भी है वो है ब्लैकवेल 2025 का नया ब्लूप्रिंट। एंड ऑन द अदर हैंड AMD का ब्लूप्रिंट है RDNA4 जिसके ऊपर इनकी ये नई चिप बनी है नवी 48। अब यहां पे तुम्हारा एकदम दिमाग फाड़ने वाला मोमेंट, जो AMD का गेमिंग GPU है विच इज RX 9070 XT, उसके अंदर भी सेम चिप यूज होती है नवी 48 जो कि 60,000 रुपए का आता है। और ये जो R9700 है इसके अंदर भी सेम चिप यूज होती है और ये आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो ये 90,000 जो एक्स्ट्रा है ये किस बात के हैं?
सिर्फ मेमोरी डबल करने के लिए या फिर कूलर बदल दिया इसलिए? इन डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा एंड ऑनेस्टली सेइंग इट्स फेयर। सेकंड वर्ड जो तुमने अगेन बहुत सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्यूडा। एंड लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बट मैं बताता हूं क्यूडा दो चीजें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक होता है क्यूडा कोर्स, जो कि एनवीडिया के कोर्स हैं, यानी कि कैलकुलेटर्स, जो कि एनवीडिया के अंदर हैं 21,760। एएमडी इन क्यूडा कोर्स को अपने टर्म में बोलता है स्ट्रीम प्रोसेसर्स, और एएमडी के अंदर हैं 4076। नाम अलग अलग है एंड काम सेम है। और सेकंड आता है क्यूडा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। यहां पे आती है असली कहानी। एनवीडिया ने 2007 में अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी अपने जीपीयूज के लिए, और पिछले 18 साल से जितना भी एआई का कोड लिखा जा रहा है, लेट्स से पाइटॉर्च, स्टेबल डिफ्यूजन, ये सारा क्यूडा के लिए लिखा जा रहा है। मतलब कि एनवीडिया का मोड चिप नहीं है, इंस्टेड ये जो 18 साल से सॉफ्टवेयर सारा कोड लिखा गया ये मोड है। अब एएमडी ने इसके जवाब में अपना लॉन्च किया रॉकएम, जो कि 2016 में आया, 9 साल पुराना है सिर्फ। लेकिन रॉकएम को अगर क्यूडा के साथ कंपीट करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक बहुत चालाक चीज की, इसके अंदर डाल दिया HIP, which is a ट्रांसलेशन लेयर, जो कि क्यूडा की कमांड्स को एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। इतना एग्जैक्ट कि एएमडी की जीपीयू पे अगर तुम पाइटॉर्च में जीपीयू चेक करने लगो तो तुम्हारी कमांड यूज होगी torch.cuda is available। एएमडी के कार्ड पे क्यूडा पूछते हो और वो ट्रू रिस्पॉन्स देता है। समझे एएमडी ने कितना स्मार्ट मूव खेला, क्यूडा से लड़ने की बजाय उसकी भाषा सीखी। सॉरी गाइस, कॉफी गिर गई। बट थर्ड वर्ड हमारे पास आता है मेमोरी बैंडविड्थ। अब अगर VRAM वेयरहाउस है तो बैंडविड्थ क्या हुई, उसकी रोड। अब जितनी चौड़ी सड़क है उतना ज्यादा सामान 1 सेकंड में उस रोड से निकल सकता है। 5090 के पास है G DDR7 मेमोरी, यानी कि 1792 GB पर सेकंड का रोड, यानी कि एक्सप्रेसवे। एंड R9700 के पास है G DDR6 640 GB पर सेकंड, एक अच्छी हाईवे समझ लो इसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इस वीडियो की, एआई एक एक वर्ड लिखता है, यू नो राइट, और उस एक एक वर्ड को पढ़ने के लिए एआई को VRAM में Cyberpunk 2077 looks so good on CRT, and I did not expect that I will be playing it mostly on this instead of my 4K OLED 27-inch screen. You know, when you play a game, after finishing your session, you have memories about the game. These memories are complemented with the image, right? Because video games is a visual form of art. So you remember how the things looked, how things felt when you looked at them. You remember stuff with your eyes. When I played Cyberpunk on CRT, the memories felt so different from the ones when I played on the flat screen, even on OLED. Even in 4K, it feels much more like you've been there. I know it sounds corny, but I cannot even explain it with words properly. These memories, they feel much more real. If you own a CRT monitor and you play games on it, leave a comment and try to explain the feeling, because I cannot pick words. Kinda reminds me of VR a little bit, but I would say it's somewhere in the middle of just playing on a flat screen and playing on VR. The colors, they blend so naturally. The neon signs, everything looks so much more alive. It's like you're not looking at the screen, it's like you're looking in the screen. And by the way, the fact that you can ramp up the settings to the max, why are you doing slowly? GLAA, everything maxed out, because the resolution of this thing is because of this old technology, it still looks as sharp as 4K. And later in the video we will talk about how it works. I will try to explain, but still I cannot really comprehend what is even happening there. And I'm playing at fixed 100 Hz because this monitor has 100 Hz right now, but you can set up any amount of Hertz and it has zero input lag. It feels so snappy, and this immediate response also adds to the whole feeling on how you play it. Some people in the comments on my previous video said that you can just use a CRT filter on the game, but that's not how it works at all.
So why it is still sharp on a low resolution? CRT monitor doesn't have pixels. Comparing to the LCD screen or OLED, when we will have a low resolution there, the image will look pixelated because pixels became bigger. It combined some of them and it looks worse. Now here, there are no pixels. As an example, it's like a beam of light shining from the inside on the screen, and it's like painting the image. On my OLED, I have bricks, right? Pixels are bricks. And on this thing, it's like a brush. I don't know how to explain it better. If you know how, comment. So low resolution doesn't show visible squares here. And on top of that, the light also naturally like bleeds into empty spaces next to it. Like an ink can spread a little bit on the paper. And that's what makes the image like smooth. It blends the edges instead of making them look sharp like pixels. What's similar between this one and OLED is the true blacks, because this also lights up only the parts that needs light. So it's funny how we regressed, right? This one had true blacks in early 2000s. Then we spent like 15 years or something, or 10 years to get to true blacks again with OLED. And a little more techie explanation, which Claude helped me with. Basically an electron gun in the monitor shooting a beam on the back of the glass, which lightens up phosphorus. It's like a phosphor dots or stripes depending on the technology of the monitor. One of them is more superior, I think, the stripes. And it basically repaints the image all the time, like boom, 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 boom. Instead of having like static grid of pixels like the modern monitors do. And that's why on this thing we have literally zero input lag. So I explained this technology as best as I could. Maybe someone can explain it better in the comments. I saw a couple of videos about this trend, CRT monitors, especially with modern games. DLSS 5 marks a crossroad in the future of graphics. We have on one side the traditional method of just raw power, pushing it to the limit, more cores, more VRAM, more memory bandwidth, and how that's been scaling over time, getting ray tracing, getting path tracing, more realistic lighting techniques. And then we have on this other side AI and its use of leveraging these techniques that, well, let's just be honest, we don't really fully understand at this point. And NVIDIA's making the bet that, well, generative AI is the future of graphics. And from my understanding, this does replace ray tracing and path tracing. Marking my last video, DLSS 5 says goodbye to the age of RTX. Kind of a self-fulfilling prophecy here. I think DLSS 5 is cannibalizing the RTX branding in real time. And to be honest, this just extends NVIDIA's moat even further in the gaming GPU war. Let's talk about it. If you're a PC builder or if your PC is just seriously dirty, you need to check out the WorkPro X 20 volt compressed air duster. This thing blows hard, let me tell you. It has a 300 watt burst power mode that basically will clean your computer in a second. I have to tell you, I did some summer cleaning on my computer, blew out all the dust, and I was impressed with how the GPU. They have not stated what those GPUs are that are compatible, although it's pretty much guaranteed this is going to run on a single 5090. At this point, we know that that will be able to work, although all other graphics card, it's kind of up in the air whether it's going to really function as intended with anything less than 32 gigabytes of VRAM. If I would have to guess, I would say 5090, it runs as intended. 5080, 5070 Ti, it's gonna run with some compromises, probably lower settings. 5070, it may or may not run at all. And then the 5060, yeah, you're probably just not gonna be able to run this on 8 gigabyte graphics cards, at least to any
reasonable frame rate degree. I don't think it's gonna really run that well. But we're gonna have to wait and see till this fall to see really what GPUs this runs on, what frame rates we're getting. Now, NVIDIA has said they're targeting 4K 60 FPS, and you already know that's gonna be with the 5090, probably with DLSS turned up to ultra performance mode. And I'm hoping there's no frame gen on a 60 FPS target, but I wouldn't hold my breath on that one. Now, a great thing for them to introduce with DLSS 5 would be neural compression technology on the VRAM, so you could actually make something like that would take 8 gigabytes of VRAM, run in a 1 or 2 gigabyte VRAM buffer, and at that point, sure, maybe the 5060 could run it. Hey, anyone there? How did you get here? What do you think? It is an island. You, Mikkel, the Lightkeeper? Jorund from Bjorn sent me. Where'd all those wraiths come from? Last saw something like this near Vergen when... Nowheres. That's just it. Fire went out and wind died of a sudden. That's how it started. Came out here for oil, stepped out of the house, looked up, saw the mist rising. Then the ghost showed, came straight at me. Bolted back inside, hosped the door, and then I heard it. Someone whispered me name. Mikkel. Mikkel. I look out. There's the wraith. Big bugger, bigger than the rest, and cold flowing from it. Such cold the windows frosted o'er. This wraith, the big one. Tell me more. It seemed more clever than the others. Like it knew everything. Haven't helped much, have I? Sorry. Only saw it once. It disappeared right after. These ghosts didn't appear without reason. Something brought them here. Any ideas? No clue. There's nothing here. The lighthouse, me hut, just rocks besides. Even bloody drowners know there's nothing for them on Elberg. Strange. Need to look around. Here. This key opens the lighthouse. You know, in case you want to look inside, or you need to run from something. Look! There! It's him! I see it. Now shut your mouth and go light the fire. Remember, you fail, the penitent will kill me and come for you. Hurry up. Don't know how much longer I can manage this. Did it work? It did, but that doesn't make the island safe. Because you're still here. A lightkeeper who lures ships onto the rocks. Sheesh. I made a mistake. I know this now. Swear by Freya and all the gods, never again. Absolutely never. As soon as we're done talking, you're gonna pack up and leave. For good. Understand? But I understand.
of carrion. Necrophages. Nils. Gotta be. Some monster dropped him from high up. Britt wasn't lying. Oh shit. Show of hands in the YouTube chat for the stream clip. Who is excited for The Witcher 4? I am. Me. This guy. This guy right here. If you're excited for The Witcher 4, subscribe. Them's the rules. I don't make the rules. I just make them up. I'm really pumped about this, but one of the things that's been most intriguing about the kind of marketing push and lead into The Witcher 4 has been this demo, which I'm sure you all have seen, and we have looked at it 1,000 times. The Witcher 4 tech demo, which they stressed, as you can see in the text at the very bottom, technical presentation, not actual gameplay. But this is basically what the game, what they're shooting for the game to look like. But probably the most impressive thing that they showcased in it was the crowd tech, at least to me. In terms of overall graphical fidelity, I mean, of course, it looks good. It seems to be like a little soft, so it's definitely running at a sub 4K resolution, and they're doing some upscaling. Digital Foundry's done a bunch of analysis on it, but you know, the stuff that really blew me away were the dynamics of having this many NPCs on screen behaving in a more realistic way, and really dynamically as they kind of moved the camera around. They eventually showed this moment where they started adding in even more NPCs, which is just something that previous iterations of a lot of these open world games have struggled with, having this many NPCs with unique outfits and behaviors and animation rigs and logic and movements and everything. That's just really hard to do. It puts a massive strain on the CPU, massive strain on the GPU. Everything is just, it's tough. Really tough to do this. A couple of months ago, a user created a video, a guy named Mr. Cheetah, or Cheetah? I think Cheetah, it's a mouse. I think it's cheese. He posted this video. I tested The Witcher 4's animation tech, or Witcher 4 demo's animation tech. And this has been recommended to me by several of you guys who watched it, said that it's amazing. I watched the first few minutes and I was like, oh, we got to talk about it. We got to look at this on stream because this is freaking cool. Because he actually goes in and breaks it down and tests it to see if it's real. Because let's just be honest with ourselves. You can get away with a lot in a tech demo that does not actually make it to a final game. Like, there is a difference between what's in a tech demo, which is why they stress it's a tech demo, and what's actually practical on consoles and at launch, right? So he's actually gone through and tested it to see if this actually could work. If so, how it works, and break it down to see how realistic is this and how does it compare to other games such as, you know, what Red Dead has done, or as you can see here in this scrubbing, he even looks at Kingdom Come Deliverance 2's NPC system, which I still insist is one of the most advanced NPC systems of any game that's ever launched. It's freakishly impressive, and I don't think it gets enough love. But having said that, let's check this out. Again, make sure to go check out the video. I'll have it linked in the description and everything of the stream clip. Mr. Cheetah, give him a sub while you're on a sub spree. So CD Projekt Red showed this at Unreal Fest last year. Over 300 NPCs in a marketplace running at 60 frames per second on a base PS5. CD bumps a vendor, the apples spill, a kid runs for one, a pig chases another. What CDPR called an unscripted chain reaction. The conversation since has been pretty much what you'd expect. Some confusing this tech demo for real gameplay, others skeptical of the visuals, plenty skeptical of Unreal itself. But the thread I got stuck on was different.
People were calling back to the Cyberpunk E3 gameplay demo from 2018. They've heard these NPC promises before. So what's different this time? To answer that, you need to know what was hard to begin with, because 300 fully animated characters in one scene is the number studios have been working around for a decade. Every open world game that has tried has hit a wall somewhere, a wall that isn't rendering AI or physics. The pitch of this tech demo: CDPR and Epic build tools that move it. The architecture behind the demo is public. The tools ship with Unreal, which matters. The demo itself we can't verify. That's CDPR seen on CDPR's hardware, and we won't see the full thing until the game releases. But the architecture underneath is in Unreal today, so we can do something better than just take their word for it. We can test whether the tools do what they claim to do. Which I love the idea of doing this. I wish I knew how to work Unreal like this, because imagine, it's just so cool to be able to be like, they claim this is possible. Let's see, full stop. Let's give it a shot. You know, I'll be able to see if we're making stuff up, if we're being silly, you know, we'll be able to tell. Before we open Unreal, it's worth understanding what we've been working around all this time, because the problem isn't new. You've watched games try to solve this for years. You've already seen this. When people talk about NPCs that feel real, they're usually talking about Red Dead 2. NPCs remember you, they react to the weather, they have opinions about your house. Bump someone in St. Denis and it cascades. A person shouts, a witness reacts, the law gets involved. But count the people on screen. In St. Denis, the busiest place in the game, you're looking at maybe 50 or 60 at a single time. Rockstar made each character so deep, so expensive to animate and simulate that the engine simply can't afford more of them. It doesn't hurt the game, it's exactly what the setting wants, but the trade-off is still there. Well, you notice, this is also something to appreciate, is that when, like, part of the balancing of building games like this is that you have to understand what your limitations are and then kind of embrace them and build the game around those limitations. So, for example, if you know you can't have 1,000 NPCs on screen, then you're like, okay, I can't have 1,000 NPCs on screen. Let's not set up a quest line where you would need to have 1,000 NPCs on screen, right? Like, if we can only have 20 or 30 simulated, let's not have a quest in a sporting arena where there's thousands of fans, right? Because that will make it very, very clear that they're not all fully simulated. We'll have to do puppet boards and all sorts of stuff. And there's some clever ways that you can hide that sometimes and break it down. KCD, for example, does that on some of the sieges, where you'll see maybe 50 actual NPCs of enemy guards like charging towards you, and then the rest are like little cardboard puppets in the distance that are just anchored to your perspective, so they are always facing you. But in general, especially in a game like Red Dead, one of the things that you'll start to notice is that the way the game and the world has been built is to spread things out, so that you don't see them, right? Like, so that you spread them out, you don't notice the limitations, because they designed it with those limitations in mind, understanding them. It's why I also think, like, some of the best innovation and most clever design, like, decisions typically come out of these types of restrictions. They come out of limitations. They come out of, we can't do this just brute forced with raw computer power. We've got to find a more clever way of doing it. And so they do, you know, and this is a phenomenal example of that. Another example would be like, do you remember in the, it went viral a little while ago, a clip of the Walking Dead mirror, the Walking Dead mirror in the car. Let me see. Was it not The Walking Dead? What's the game? The freaking game. Do you guys know what I'm talking about? I thought it was Walking Dead. Is that not what it is? I mean, this is the sequence, but there was somebody that pulled the camera out and showed it. You know, they actually pulled the camera out and showed it. Telltale's The Walking Dead. I think it spread on Twitter real quick. It's really cool. Basically what they did is they just built a pocket dimension for the car out the mirror and then like reflect it back. Is it, boundary break? Boundary break. Okay, hold on. We're almost there. Yeah, look at this. I think this is it. Okay. Boundary breaks.
Thank you, Banana. The camera is focused inside of the vehicle at all times. Now, the first thing I noticed, and it's the first thing I want to show you, is that you may recall being able to see the reflection of the officer in the rear view mirror. Well, video games love to do all sorts of different tricks in order to do reflections, but how it's pulled off in The Walking Dead is a little outside of the ordinary. As you can see here, there is a second model for the police officer, and the environment is a cone that has special textures that loop through the cone. And so anytime you look at the cruiser from an angle that's outside of it, this is what you're going to see. This is probably also why you never get to see the camera angle outside of the cruiser. Meanwhile, I'm sure a lot of you want to know what the city... And then they just cull everything around it. You know, they just cull everything around it. But like back or nowadays, they would just like, I guess we're going to ray trace the reflection, just do it that way. But they came up with this really clever way of basically building a duplicate scene. And then they cull everything through like the framing of the rear view mirror so that everything is just duplicated. It ends up being really performant. I remember this game running on my iPod Touch, like my little iPod Touch. But it's because like they had to come up with a really clever solution and way to do it, you know, but it's just really well done because they were forced to come up with a solution based on the technical limitation. And I just love finding out about these little tidbits and tricks that they use. But anyway, thank you, chat, for helping me find that. Every open world studio has found a different place to put that trade-off. Hitman Absolution put 1,000 people in a level in 2012, but most of them are shells. Empty bodies looping an animation with AI brains that only get swapped in when gameplay needs them. Assassin's Creed Unity filled the streets of Paris 2 years later, but anything past 40 meters is running on 11 bones, and full skeletons are capped at around 40 characters. From a rooftop, it looks incredible. I remember this. It like is both super impressive and also just so jarring because you can even see like as the camera moves in Unity, you can see the shadows and stuff. Like watch these guys down here. You'll see the shadows and the models actually popping in and out because like you just said, they could only have 40 full quality NPCs basically, and the rest had to be pared down and simplified. And so like from a distance, it looks really cool. And full skeletons are anything. Assassin's Creed Unity. Like look at that. That's ridiculous. That's crazy. But the only way they could get it working on PS4 hardware and Xbox One hardware was to come up with these like major trade-offs where all of these are just like distant, very, very, very basic puppets. And then the ones really close to you are high quality. But because of how the game is built, where like unlike Red Dead, they didn't try to spread things out. They're like, no, we're going to show how many we can simulate on screen. So we're going to just like fill the whole map with them. And that makes it really jarring when you see the technical limitation, you know? They filled the streets of Paris 2 years later, but anything past 40 meters is running on 11 bones, and full skeletons are capped at around 40 characters. From a rooftop, it looks incredible. At street level, as long as you don't move the camera. Cyberpunk tried to hold the look without faking the crowds. Every district has its own visual language, every NPC dressed to match. But follow anyone for a few seconds and you see the gap. They walk their loop, maybe sit at a bench, then vanish when you turn around. They don't remember you, they don't react unless you point a gun at them, and even then they forget. The art direction is extraordinary, but the behavior underneath is still shallow. That's why I've said, like, I think that the next frontier should be more realistic NPCs. Like, I'm telling you what, that will have such a bigger impact on like the quality of open world design and just, I mean, not even open world design, just game design in general. If you can have like truly intelligent NPCs, that will elevate the experience way more than like shiny or metal. I'm just saying, maybe I'm just being unreasonable, but I swear to God, like the NPCs are one of the things that take me out of an open world game instantly. I think it's part of the reason I love KCD 2 so much is because they do this very, very well. And it's definitely an area for improvement. I'm excited to see what GTA 6 has done with it. Like imagine Red Dead 2's NPCs are smart. That game is 8 years old. 8. We're old, fam. We are old. Imagine what GTA 6 is going to do. Like, man. KCD 2 might be the most recent ambitious shot anyone's taken at doing both. Warhorse Studios put 1,500 NPCs in Gutenberg, everyone on a daily schedule, and the behavior underneath is genuinely reactive.
NPCs comment if Henry's dirty, drunk, naked. They react to your horse. They remember you. But ride into the city and you notice something. You can't gallop. The game physically slows you down because the engine needs time to load and animate the NPCs around you. And if you move too fast, you can't keep up. 5 studios. But it kind of works because you're like, oh, well, I'm in a city. I don't want to run around. I might hurt someone. But it's actually because they just can't simulate things fast enough. They got to slow you down, you know? 5 different places to put that cost. Some went big and faked the characters. Some kept the numbers small and went deep. Some reached for both and felt the seams. When CDPR showed 300 characters in a marketplace, all doing their own thing at 60 FPS, they were claiming to break through something that shaped every one of these games. So what was it? Animation. Let me explain. If you want your game to run at 60 frames per second, you have about 16.7 milliseconds to do everything. So that's your gameplay, AI, physics, graphics, audio, UI, animation. All of it has to fit inside that window. Miss that window and you feel it. That's the classic stutter, the hitch when frame time spikes. And most of those systems have been getting more efficient over the years. Rendering went massively parallel. That's what Nanite is. Millions of triangles processed without the CPU managing each one of them. Physics moved off to worker threads. Particle systems got completely rebuilt. But animation, specifically animating lots of characters at once, is where the game thread still gets hammered. And it's not because nobody tried. It's because animation has a problem the others don't. Rendering doesn't care what quest you're on. Physics doesn't check whether your character is injured. But animation is tangled up with everything. What the AI just decided, what the player just pressed, what state the game is in. That entanglement is what makes it so hard to split across scores the same way rendering and physics did. And this isn't theoretical. In a talk from 2024, a CDPR core engineer put it bluntly. Animated characters are the heaviest thing you can put in a scene. On every title hit shipped, that was what limited their vision. Every open world studio hits this wall. And Unreal has been chipping away at this for years. A lot of the low-level pipeline can already parallelize, but the way developers actually build animation system still tends to pull work back onto that single main thread. I remember watching like one of the dev deep dives on Unreal Engine 5's the animation pipeline, and it is fascinating, like how they have to try and like do this like, okay, we're going to pull the information for what the NPC needs to do in terms of animation. We're going to pull that here and we're going to calculate that at this moment, but we're not going to calculate what the animation movement is until later in the frame time, because we can rearrange it and put this here and put that there and do this over here. And it's just like, it's almost like Tetris. Like they're just trying to find ways to fit these different blocks together in a more efficient way. And you probably don't, I mean, not probably, you will never notice it because they're doing all of this in the realm of like milliseconds, you know? It's like, well, this takes half a millisecond to calculate on base PS5 hardware. So we've got to put that here, and then we got to do this here. And if everything works, your game is just locked at 60 and you never notice it. But they have to be like so precise with all of those little placings at all times. It's crazy. And when you've got 500 characters, that's 500 visits the game thread every frame. And that's the part that gets expensive at scale. So let's see what that actually looks like. I've got Unreal 5.6 and I'm going to start simple. 500 characters in a bare scene with 3 animation states with transitions on Unreal's default animation system, Animation Blueprint. There is no AI, physics, or gameplay. I just want to isolate the animation system and see what happens. Okay. We're getting about 88 frames per second. Let's look at where that time is actually going. This is UWorld Tech, where your entire simulation runs every frame. Gameplay, logic, AI, physics, animation, all of it. In a normal game, this would be split across a dozen systems. But this scene has none of that. It's just 500 characters playing animations. So almost everything under the world tech here is animation work. And look at how it's structured. 500 tiny slivers, one for each character. The game thread touches every character's animation instance, orchestrating hundreds of tiny per character operations every frame. That orchestration is what you're seeing as those 500 slivers.
And sum all those slivers up together and you get 4.8 milliseconds. That's almost 42% of the frame just to manage this mismatch. But this is 500 mannequins in an empty scene. No one ships a game that looks like this. This is Epic's City sample, the full Matrix Awakens environment. If you played the demo back in 2021, this is what was running under the hood. Dude, it's crazy to think that was 2021. It does not feel like it was that long ago, but I guess it was. 2021, man. Night geometry everywhere, lumen global illumination, a full procedural city with traffic systems, pedestrian AI, and a crowd of meta-human characters walking the streets. The crowd behaviors, where NPCs go, what they do, runs on a system called MAS. The animations on those characters run on animation blueprints. And every character has a lot going on. There's 2 separate animation pipelines per character, one for the body and one for the head. And there's also accessories, facial rig evaluation, look at behaviors, blend spaces. These are expensive characters. If the synthetic test hit 42% on bare mannequins, it should be catastrophic here, right? Let's find out. Catastrophic's a good way to put it. This should explode, right? Let's see, at max crowd density, we're getting about 68 frames per second. That's a 14.6 millisecond frame. Summing the animation timers, we get about 1.24 milliseconds. That's roughly 8.5% of the frame, which actually sounds fine until you look at what you're actually counting. The scene doesn't look empty. There are characters everywhere, but most of what you're seeing here is exactly the tricks we talked about earlier. Simplified skeletons, reduced bone counts, characters running cheaper evaluation at distance. At default settings, the number of metahumans running at full animation fidelity is about 16. In the scene Epic built to showcase what Unreal 5 can do with crowds, 16 characters get the real animation pipeline. So what happens when we push past that? City sample exposes LOD controls for the crowd. I can tell the engine, keep more characters at full fidelity instead of culling them. And the shape is exactly what you'd expect from the mannequin test. More characters at full fidelity means more slivers on the game thread, more per character dispatches, more serial work that can't overlap. So instead of walking through 4 profiler captures, let's just plot the numbers on a graph. So we start at 16 characters, and time spent by animation on the game thread is 1.24 milliseconds. Push it to about 39 characters, 2.68. 112 becomes 5.78. 223, and we're at 10.45. It's linear. Every metahuman you add costs the same as the last one. There's no economy of scale because the architecture doesn't allow it. The same structural problem from the mannequin test, just wearing more expensive clothes. And in frame times, it's 68 FPS at baseline, then 42, then 27, and finally at 13. Now, hold on. 13 FPS is a 76 millisecond frame. And we said animation is 10 milliseconds of that, which means animation is 13% of the frame. Not exactly the thing breaking this scene, except that's only what the profiler can label directly as animation work. Animation doesn't just stay in its lane. It blocks game thread work, thrashes the cache, stalls ticks that are waiting on it. That pressure is real, but it's smeared across timers that don't say animation on them. So the 10 milliseconds is the absolute floor, not the ceiling. And the simplest way to prove it is to just turn animation off and see what happens. So I did. Same scene at... Dude, Elder Scrolls 6 looks awesome. Max density, everything running except the animation system. The frame time dropped by 40%. At this crowd density, animation is by far the single largest cost in the scene. And it's not close. That's the wall. So here's the thing about that curve. It's not a performance bug. You can't shader optimize your way out of it. Can't throw it on a faster GPU. The game thread has to touch every character, every frame in sequence. It's just the way it works. And it's worth understanding why it's built that way, because it wasn't a mistake. Animation blueprints are 11 years old. When Epic designed them, a typical multiplayer match had around 10 players, and consumer hardware was shipping 2 to 6 cores.
The system was built for that world, and it scaled well. Today, Fortnite runs 100 players in a PR match across everything from the Switch to high-end consoles, all on animation blueprints. And that's a genuine success story. But the ambition has moved past what the system was designed for. 100 capsule-driven players in a big arena is a different problem than 300 fully animated NPCs in a tight, open-world marketplace, each one running a heavy animation pipeline. The architecture served its era, but the era has changed. So CDPR's bet was rebuild the architecture. We'll do it ourselves. This is, I mean, again, like the best tech is often invisible, right? Like I think Steve Jobs said, technology is at its best when it's invisible. And this is one of those examples where even just that shot that we just saw with the camera panning, think back to that shot from AC Unity, where just moving the camera left to right caused like so much flickering of shadows. The NPC's models were being swapped out in real time, like cascading effects and problems over and over and over and over and over again. Time and time and time and time again. And then with this, we're seeing a smooth sweep without any of that. Like look in the corners, try to find an NPC that's swapping out or that's going from T-pose or hands on the hips to like actually moving and stuff. You're not seeing any of that. And it's one of those things like if you don't know where we're coming from, you may not appreciate where we are, you know, because this is one of those things people see and like, yeah, it looks good. But it's like, it is in the details. It is so much better than it was just a handful of years ago. I mean, pretty insane. So CDPR's bet was rebuild the architecture. There's an experimental plugin shipping with Unreal 5.6 called the Unreal Animation Framework. It's a ground-up rebuild of how animation evaluation works. CDPR started building towards this at least a year before the Witcher 4 demo. In August 2024, they showed 1,600 animated characters running on 4 worker threads, with the game thread basically empty. They built it in partnership with Epic, and the core architecture made its way upstream into the engine before the Witcher 4 tech demo. The idea is simple to state and architecturally radical. Animation evaluation moves off the game thread. Instead of the game thread stepping through every character one by one, animation work gets batched and distributed across worker threads. The main thread is left with just scheduling and cleanup. Let's see if it actually works. Here's the same scene with 500 mannequins, this time running with UAF. Only the pipeline has changed. 87 frames per second became 104. That's decent, but that's not the number we're interested in. Look at GT animation. It's 0. It's not mostly clear, it's 0 milliseconds. The profiler can't find it. Those 500 slivers, the 4.8 millisecond tax on the game thread, the 42% of the frame we were looking at a few minutes ago are not reduced. They're structurally gone. But placeholder mannequins in an empty box is one thing. What happens in the real scene? Here's the same crowd, same characters, and the same everything. Only the animation pipeline has changed. I ported both the crowd and the vehicles to run on the new pipeline. And I should say that was not trivial. UAF is still experimental, the documentation is sparse, and this was a complete rebuild of crowd animations. But the point of doing it is that this is the same scene with the same workload. If the numbers move, the architecture is why. Let's look at the stats. Frame time, 13.4 milliseconds. 75 frames per second, up from 68. GT animation is 0.44 milliseconds, down from 1.24. That's 1 point on the new line. About 25 metahumans at default density. But the default case isn't where this matters. What happens when we push the LOD the same way we did with animation blueprints? Crank it. At about 46 characters, UF holds at 0.48. 131 characters, 0.84. 263 characters, we're at 1.35. The UAF line barely moves. That's ridiculous. That's ridiculous. Okay.
So like looking at the traditional way they did it, yeah, you add more NPCs, you know, you're dropping to 10 frames a second. Like it just can't do it. But when you reorganize everything under the new framework and it is running everything in a more efficient way, that doesn't become a problem. I mean, still, it's incredibly difficult. It's experimental and all that. But I mean, that is a seismic shift in efficiency. From 25 to 263 characters, a 10-fold increase in crowd density, and GT animation costs didn't even triple. Under animation blueprints, every extra metahuman costs the same as the last. Under UAF, the per character cost in the game thread drops as density goes up. The curve bends. Now, let's look at that graph one more time. Animation Blueprint's game thread spent 1.24 milliseconds on animation with 16 characters. UAF's game thread spent 1.35 milliseconds with 263. With the same budget on the game thread, UAF handled 16 times the number of characters. Jeez. And before we pull back, one more check. Remember the control test from earlier, the no animation test? That number doesn't change between animation blueprints and UAF. Animation is off either way. So what changes is how far each pipeline sits above that floor at max density. Animation blueprints at 40% above that floor. UAF sits 13% above it. It's the same story as before. The labeled GT animation number is what you'd measure in practice, and by that measure, UAF's costs barely moved. The gap to the no animation flow tells you the hidden ripple collapse too. UAF isn't just cheaper in its own lane, it's polluting the rest of the frameless. Now, UAF at max density is still only running at 18 frames per second on my machine. That's not a shipping frame rate. UAF didn't make the scene magically fast. What it did was move the bottleneck. Animation used to be the thing capping the scene. Now it's one cost among several others. Rendering, Baltic work, mask out simulation, all the 2021 systems City Sample is still running under the hood. So if animation isn't the bottleneck anymore, what does that actually change? What actually matters? So let's come back to this. City bumps a man carrying a crate. This is the one shot or the one element, like the crowd density, I could believe that they found a way to do that more densely by reorganizing stuff like was just demonstrated. But the thing that I'm like, I'll believe it when I see it in a final game is this stuff. She bumps into the dude, he drops the apples roll down the hill, the kids go to grab them, and then the pigs break out of their pen to go and eat the apples. Like, I'm sorry, I have a really hard time believing that that's going to be something that can just happen in The Witcher 4. Maybe it does. I'd be shocked. Because, like, okay, a guy's carrying a loaf of bread. Bump into him. Does the loaf of bread cause the pigs to go chase down? Do they have a different tag on every item based on whether it's edible or not? You know, like I struggle to believe that that's going to be like a real encounter and thing that can happen. Stop being a Debbie Downer. You're right. I'm sorry. You're killing my buzz, man. Stumbles, drops the apples, and they roll downhill. A kid runs over. Pigs chase another. CDPR's name for this, unscripted chain reaction. CDPR's engineering director framed it as a thesis of the whole demo. Interactivity not just between the player and the world, but between elements in the world. We couldn't see what that meant at the start of the video. But now we can, because look at what it actually requires. It requires the man with the crate, the kid, the pigs, the people that turn their heads. Every single character in that chain has to be available to participate at that moment the event happens. They can't be a puppet or a reduced skeleton shell. They have to be fully animated, running their own behavior, ticking on the same frame. Yeah, that tick, like it's constantly checking for each of those states. Like, what is it checking for like the kid's logic? Is it checking like detect within 30 meters if there's an edible item that's fallen on the floor, and if so, run over to those and match onto the object to pick it up? And like, I don't know, you see how it starts to get to the point where it's like, is this really fully dynamic? Is this going to be true of every character? Can you follow this guy around as he carries the crate, knocking into him when he gets closer? What about the bear? Like, she just walked past that big bear.
If he drops the apples next to the bear, does the bear reach down and bite him? Does the bear handler respond to that? You know, like I just started to really like, I don't know. This is like for me way harder to believe than that they cranked up the animation density of NPCs, you know? And let's go back to the curve we plotted. Under the old architecture, you'd run out of animation budget around 16 characters at full fidelity. The kid in the apple crate chain, if he's 20 meters away, isn't animating at full fidelity. He's on a cheap LOD, or he's one of those empty shells from earlier games we talked about. He physically cannot notice the apple and run for it with real animation because the budget ran out 12 characters ago. The chain reaction doesn't happen, or if it happens, but it's been scripted and placed by a designer for that one street corner and nowhere else in the city. And a couple of systems are collaborating that makes all of this possible. UAF is animating every character in the chain. Mass, the behavior layer we saw earlier, is what tells the kid to notice the apple and the pig to decide it's hungry. Mass isn't new. City Sample was running it back in 2021. What's new is that UAF made the animation cheap enough that Mass has room to actually drive 300 character decisions instead of a couple dozen. CDPR have a line they've been using about the demo. Their goal, they said, was to make the gap between City and the NPCs as small as possible. Read that back against what we talked about in previous games earlier in the video. That gap between the protagonist, who is fully simulated, and the crowd, who mostly isn't, is exactly what every one of those games shipped around. Each studio hit the same wall and paid for it somewhere. That wall is what just moved. Now, a few things I want to be clear about. So like basically our assumption that you couldn't have the kids and like the pigs all like ticking and simulating and checking for different states, like, you know, whether an edible item has fallen or not. Our assumption that that can't happen or is unrealistic is based on the old sort of standard, which was that you just didn't have enough overhead to simulate that for this many NPCs. Whereas now you actually could. It still would be impressive and difficult to do, but it's possible, I guess is the point. UAF is still marked experimental. The documentation is thin. Porting City Sample was not a trivial project. At max density, the scene on my machine was still running at 18 frames per second. UAF alone didn't make it particularly fast. It moved the bottleneck. The curve bent. It didn't disappear. And The Witcher 4 is possibly years from shipping. There's a long distance between the architecture works in a benchmark and the ships in a game that players love. Yeah, and I mean, to be clear, I think that it's likely that, of course, they have more experimental versions behind the scenes, and they've got a lot of stuff they've been working on for the last few years that has not been made public. Whenever you see something publicly at one of these events, like, you know, an Unreal presentation, it's been in the works for a long time. And so I'm sure they have some even crazier versions of this running now that they may launch with The Witcher 4, but that won't become public for a while But after. remember, these benchmarks from this video are from 5.6, the first version to ship UAF publicly. For any studio picking it up today, 5.7's been out for months, and 5.8 is just around the corner. The floor keeps going up. And here's the thing, UAF is just animation. The Witcher 4 demo was also running Night Foliage, MLD Farmer, Fastio, a whole separate stack I'll get into in a future video. But if this demo had shipped on a proprietary engine, we'd be just taking CDPR's word for it. The reason I could open a profiler and actually test the claims is that all of this ships with Unreal. CDPR and Epic built it together and pushed it upstream. It's not a competitive mode. It's a plugin any dev can download. For 20 years, every open world game has shipped with some version of a crowd density slide. Every player knows what happens when you crank it. The frame rate drops because every extra character costs the same as the last one. That equation just changed. The question used to be, need characters or dense crowds? Pick one. That question isn't gone, but the cost of choosing both just dropped. And the curve bends the right way now. That's good. That's good. I honestly, again, I respect the hell out of someone who is like, oh, I saw this claim made
let's go find out. Let's test it ourselves. I respect the hell out of that. And I mean, doing the work and having the talent to be able to get into Unreal Engine and actually push it to the limit and try it yourself is pretty damn cool. So get over. I'm going to share this link again in the chats. I encourage you guys to go over, toss a sub, and follow, because there's just not that many. There's not that many people who are able to do stuff like this, and I respect the hell out of it. Yeah, Mr. Chetta again, over on YouTube. Give him a sub, hit the like button, show him some love, because this is one of the more impressive breakdowns of stuff like this that I've seen, and I think it's really cool. But the main takeaway is, while I think it's fair to be cautiously optimistic, dare I say skeptical of some of this stuff, I think it's also important to recognize that there is a ton of work being done. Tenacity SND donated $19.99 through Super Chat. Do you know or think that The Witcher 3 DLC will have returning main characters and their voice actors? Like Ciri, Yen, Triss, Dandelion, etc.? My only complaint with Phantom Liberty DLC on Cyberpunk was that it didn't. I don't, to be clear, I don't know. I believe everybody is on under really strict NDAs, so they can't say. I would expect, they brought back Geralt's voice actor, maybe, I would imagine whoever's playing Ciri in The Witcher 4 will be there, because I'm expecting Ciri to be here. My understanding is that this is supposed to bridge the gap between The Witcher 3 and The Witcher 4. So I think it's very, very likely that this is where it's gonna go. Like, this is they're gonna have her there, and they're gonna merge the storylines together and kind of cross that bridge all at the same time. But yeah, I think they'll bring some of them back. I'm not sure if we'll see Yen or Triss in this DLC. We might. I wouldn't be mad about it, but I don't know if we will. I don't know. But as far as I'm aware, they haven't communicated anything clearly at this point. But I appreciate the 20. That's very nice. Very, very nice. Very generous of you. Thank you. That was a wildly impressive video. I can't even imagine how many hours you put into it. Well, again, it's just, I respect the hell out of somebody being like, I have the capability to test this, and it's a claim that's made. Hey, we built this thing out that changes the game in terms of animation, pipelines and simulation and everything. And he's like, okay, let's see. I really respect it. It's really, really cool. He took my thing. Red flag. 16 times the detail. It's so nice. I really like this. Oh, this is like brand new. So we have our plate here for the KWD Fans Tiger Light. Are these still in stock, by the way, guys? Do you know? Again, this is a client build today, so it's not like I did any legwork of making sure things are in stock or not. Some foams. And then here's our PCB. I couldn't remember if this had lots of flex cuts in it, but now I remember. And then we have, this is the tape mod they have. I think it's really cute. I just now realized there is a Pokeball there. I did not realize that prior. Cute though. Oh, this isn't stock? Oh, nice. It's a neat little board. Definitely a neat little board. And we have all the screws and stuff. This I'm gonna put to the side. So that's a lot of stuff in there. And then more stuff. God, there's a lot in this box. And then we have the case. I actually don't know what color this was. Oh, I have actually, I know it's not.
it.